Ladies and gentlemen, a very warm welcome to Symposium 2023. May I now request the convener PAPS, Mr. Zain Sharik, to explain his vision behind this symposium and how this symposium is unique in its own sense. Please welcome Mr. Zain Sharik. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Hopefully, हमारा aim तो ये है कि we have got a cross spectrum of representatives from across the Pakistani industrial, economic and governmental base. EDB की representation है यहाँ पे, IBA से we have economic advisory council के जो founding member है. Then from the OEMs we have Changan, who has recently exported successfully. We will have Tariq Khan Saab. We have Mr. Imtiaz Rastgar, who is a guru as far as export trainings and successfully exporting himself. We have Mr. Ali Khizr, noted economist, journalist, and one of the more free thinkers in our country. Then we have Mr. Amir Allahwala, who is again a success story of diversification in the automotive industry into a completely different sector. Techno mobile, जो ये अब locally in-house पाकिस्तान में mobile बना रहे हैं. उसके बाद we have Mr. Amir Allahwala, who will be on the panel. Again, it's a diversification into completely something different, medical equipment. We have Mr. Manviwala Sahab, who is an author who has written a book on the history of the automotive industry in Pakistan. And Daniel, we have mentioned everybody. So this is a pretty eclectic forum, eclectic number of people. They're all very passionate about their opinions. So the aim is to quickly go through a brief presentation from each of them, and after that we will have an open discussion. And I would request everybody that this is a very interesting and a unique collection of people that we are putting forward. So please, आप लोग जो कोई भी सवाल आए आपके दिमाग में, आप वो नोट करें. पैनल डिस्कशन में बेशक शेयर करें. आफ्टर हर प्रेजेंटेशन आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा टू आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट. So at the end, the aim is to have a fun, engaging and stimulating conversation, and for us all to learn how to work together, grow together, and make Pakistan a greater nation. Thank you, everybody. The purpose of this symposium is to come out with new ideas that the entire industry can thrive from. For the first speaker, I would like to request Mr. Imtiaz Rastgar Saab, who is a very seasoned export consultant. May we please welcome Mr. Imtiaz for the opening speech in the symposium. सारे बहुत से दोस्त और आप नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी हिस्ट्री काफ़ी मेरे सामने आ रही है जी. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. और मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी क्योंकि मुख्तलिफ गुजरी है तो मेरे ज़ाविये भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं देखने के. एज ए trainer, also as an exporter and making a system for exports. तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया काफ़ी चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखने का, और इसी को मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह आज. तो सबसे पहले बात यह है कि हमारी बहुत सी एक खुशकिस्मती है कि जो ब्लेसिंग्स हैं पाकिस्तानी वेंडर्स पे, वो क्या क्या है. दुनिया के जो बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स थे, हमने उनके से काम करना सीखा. हमने तो नॉर्मली जिन लोगों से हमने काम करना सीखा, उनके जो बुज़ुर्ग थे वो इंग्लैंड जाते थे, वहाँ पे बड़े मैनुअल किस्म के काम करते थे. वहाँ से जाके गोरों से उन्होंने काम सीखा, अपने मुल्क लेके आए और इस तरीके से उन्होंने तरक्की की. हमारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि अल्लाह ने उनको पाकिस्तान भेज दिया हमें सिखाने के लिए, और हमने वो चीज़ें ऐसी अच्छी अच्छी सीखी हैं जो कि पंखे की इंडस्ट्री ने नहीं सीखी.
और बेशुमार लोग, जो कोई वॉशिंग मशीन बना रहा है गुजरांवाला में, कोई पंप बना रहा है, उसने वो काम नहीं सीखे जो पाकिस्तान के वेंडर्स ने सीखे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें घर में ला के हमारी हुकूमत ने ऐसी अच्छी पॉलिसी उस वक्त बनाई कि वो लोग यहाँ आए और उनकी मजबूरी थी यहाँ के वेंडर्स को डेवलप करना। तो वो स्टैंडर्ड भी सीखी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक सीखी, असेंबली टेक्निक सीखी। फिर इसके साथ जो हमारा नॉर्मल कल्चर है उससे हट के हमने पंक्चुअलिटी सीखी, टाइमली डिलीवरीज करनी सीखी, और उसको डिलीवरी को करने के लिए जो सिस्टम बनाना पड़ता है हमने वो सिस्टम भी सीखा, और उसके लिए जैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है वो भी सीखा। और जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वर्क कल्चर यहाँ भी सीखे। फिर इन लोगों ने ये हमें वहाँ लेके भी गए और हमने AOTS जैसे इदारों से, इनकी असेंबली लाइन से बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन आगे देखें कि क्या होता है कि हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमें एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गई और हमने उस प्रोटेक्शन को एंजॉय करना शुरू कर दिया, और उसके नतीजे में हमारी अपनी हुकूमत ने ये सिस्टम बना दिया, और करते करते फिर हमें एडिक्शन हो गई प्रोटेक्शन की। तो किसी को भी हो जाए तो फिर वो जो एडिक्शन है वो काम पे ख़राब करती है आगे। और हमने सोचा कि हमने अगर OEMs को फर्दर फैसिलिटेट किया तो इसके साथ हमारी बिजनेस चलती रहेगी और वी विल रिमेन कंफर्टेबल विद अवर बिजनेसेस। और हमने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कुछ ऐसी मुराद के देने के लिए जिनसे हमारा ख्याल था कि इससे हमारी बिजनेसेस चलती रहेंगी। और ये भूल गए कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दुनिया में और भी मौके हैं, और हमने प्रोटेक्शन के नीचे अपने कस्टमर बेस को इतना महदूद कर लिया कि कुछ हमें कंपनीज ऐसी हैं जो 1 या 2 OEMs के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अपने टोटल उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दारोमदार उसके ऊपर बनाया हुआ है। और OEM बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के एक्सपोर्टर्स हैं। वो आपके एक्सपोर्टर्स हो नहीं सकते। उन्होंने आपको क्लाइंट बनाया हुआ है, आपको थोड़ा सा बिजनेस दे देते हैं, लेकिन दरअसल वो जापान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस मुल्क के भी हैं वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो यहाँ बैठ के एक्सपोर्ट करें, वो तो आपका काम है। तो ये हमारी जो है ना बैड लक वाली छोटी सी एक इन्वेंट्री है, इसके ऊपर आप ज़रा गौर कीजिएगा। तो जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है या यहाँ से अमेरिका जाता है तो हम जाके वो जो फूल चढ़ाते हैं, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर। ये अननोन सोल्जर कौन था? ये पता नहीं, लड़ाई करना भी चाहता था नहीं चाहता था, फौज में चला गया, जाके महाल पे मारा गया, और जनरल साहब तो जनरल साहब बन गए, उनको स्टार 1-2 और लग गए, लेकिन वो जो सोल्जर था ना पीछे, वो अननोन रहा। तो ये जो मौजूदा इकोनॉमी की जो दौड़ है, सिचुएशन है, इसमें वेंडर जो है वो अननोन सोल्जर है। इसके ऊपर ये जो भी चीज़ मेरे हाथ में है, कोई भी चीज़ है, इसका एक ब्रांड है, इसके अंदर जिस बंदे ने कोई पुर्जा बना के दिया दूसरा, वो ही इज अननोन सोल्जर। गाड़ी के ऊपर तो गाड़ी बनाने वाले का नाम लगना है, उसके नीचे आप सब लोग जो आप में से जो वेंडर बैठे हैं, आप सारे अननोन सोल्जर्स हैं। आप कल को बिजनेस से निकल जाएं, फौत हो जाएं, कुछ हो जाए, तो आपका कहीं नाम नहीं आना है, तो यू विल ऑलवेज रिमेन अननोन सोल्जर्स। तो ये जो सारी मेरी डिस्कशन है कि आप इसमें से निकल कैसे सकते हैं, ये इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें वर्ल्ड मार्केट में और बहुत कुछ है। ये मैंने छोटी सी एक स्लाइड है, और आप लोग जैसे प्रोसेसेस में काम करते हैं, ये इम्प्लांट्स हैं ऑर्थोपेडिक,
और इसकी जो फिगर्स है ना, ये 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स में सिर्फ ये एक इम्प्लांट है जिसकी वर्ल्ड मार्केट है। तो इसको आप देखें कि ये भी तो आप जैसे लोग जो है उनका ये प्रोसेस है। व्हाई डोंट यू थिंक अलोंग दीज लाइंस? ये कंपनी है, अब ये ग्लोबल कंपनी बन गई है। इसके पास सिर्फ एक प्रोसेस है और एक टेक्निक है। ये हेक्स बार की हाई स्पीड मशीनिंग करते हैं और उससे हाई प्रेशर फिटिंग्स बनाते हैं, और इन फिटिंग्स के साथ ये स्वेज लॉक जो है ये वर्ल्ड लीडर है इसके अंदर। और आप में से बेशतर लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई जो मशीन शॉप्स के रखते हैं कि इसके अंदर उन्होंने पूरी एक बिजनेस प्लान बनाई है। और आज से 20 साल पहले भी मैं बिजनेस वीक जैसे रिसाले में इनका इश्तहार देखता था, और दे आर ए वर्ल्ड लेवल कंपनी। अब तो इन कंपनियों ने काफ़ी आगे निकल गए हैं ये लोग। अब ये आप के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन इनका एक प्रोडक्ट है, इनका एक नाम है, और ये उसमें निकल गए हैं। 1.71 ट्रिलियन डॉलर्स की हार्डवेयर, बिल्डिंग हार्डवेयर की मार्केट है। आप इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। आपके पास जितने प्रोसेसेस हैं, शीट मेटल है, मशीनिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, सारे प्रोसेसेस आपके पास मौजूद हैं, और ये मार्केट भी मौजूद है। लेकिन जब तक आप सोचेंगे नहीं डाइवर्सिफिकेशन का, तो फिर आप वही गुमनाम ही रहेंगे। ये काफ़ी मैंने कोशिश की आपने बाय द वे मैं पुराने ज़माने में ईडीबी को हेड भी करता था, और काफ़ी हमने माशाल्लाह काम किए वहाँ पे। लेकिन उस दौरान भी और उसके बाद सीबीआई के साथ भी हम लोग मुख्तलिफ लोगों को लेके गए, और ये एग्री टेक्निका वॉज वन ऑफ देम। ये सिर्फ मैंने गेयर बॉक्सेस दिखाए हैं, और पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली एक भी कंपनी नहीं है जो कि इस किस्म के गेयर बॉक्स या इंडस्ट्रियल गेयर बॉक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन नहीं है। कार के गेयर बॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन है। ये गेयर बॉक्सेस काफ़ी सादा और कम स्पेसिफिकेशन पे बने होते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी में बेशुमार इस्तेमाल होते हैं, ऐसे कन्वेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कन्वेयर ड्राइव्स में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत लोगों को एग्री टेक्निका लेके गया सरकारी खर्चे पे, और उसके बाद डच गवर्नमेंट के खर्चे पे। ये हमारे दोस्त हैं अलमास हैदर साहब, ये इनको मैंने गाइड किया था एक टाइम में, तो ये इनके साथ भी ये हुआ। लेकिन कुछ थोड़ा सा हाफ हार्टेड यहाँ पे काम हुआ एक्सपोर्ट ऑफ इस प्रोडक्ट के। फिर ऐसे ये एक कंपनी है, देखें ये दिस इज ए सक्सेस स्टोरी। ये मिस्टिकी वाले ये पहले सब कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हें समझाया कि यार आप फिर जब तक रिटायर होंगे तो फिर आप सब कॉन्ट्रैक्टर ही रहेंगे, तो बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे। तो वी हेल्प्ड हिम टू थिंक, और अब ये विकर्स और इनके मुकाबले में बेच रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में ये पंप्स। और ये पंप्स सारे वैक्यूम और प्रेशर पंप्स हैं, हाइड्रोलिक पंप्स, और दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दीज और पाकिस्तान में, और ये सारा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। ऐसे ही मोटर बाइक्स में हमने बड़ी कोशिश की, बहुत से लोग गए, लेकिन OEMs का चार्म इतना ज़्यादा था कि ये लोग आगे बढ़ नहीं सके। काफ़ी हमने मोटर बाइक इंडस्ट्री को ले जाने की कोशिश की। तो ये लोगो था जब मैं EDB में था। तो आसिम अयाज साहब ही बताएंगे कि इन्होंने ये लोगो क्यों हटाया मेरे जाने के बाद। तो सिर्फ लिप सर्विस तो काफ़ी नहीं है, तो ये दुनिया हमारी मंडी इस वक्त भी था कि ताकि जितने लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के ये डाइवर्सिफाई कर सकें, है। और ये बात है 1905 की जब ये लोगो बनाया गया था, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर इसको ये टैगलाइन हटा दी गई वहाँ से। तो अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं जी। और आप ये देखें कि ये लाहौर में एक बैठा सिट्रों गाड़ी के पार्ट्स बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है अफ्रीकन मार्केट में, फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन मार्केट में। ये SP गियर्स हैं। अब जितनी कंपनियों के मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ, ये सब वो लोग हैं जो वेंडर नहीं थे।
वेंडर जो है ना उसकी एक अलग साइकी बन गई है, वो समझता है कि मैं तो वेंडर हूँ, मुझे तो ये बाकी सब लोग शायद घटिया हैं या पता नहीं क्या दिमाग में क्या है कि वो किसी और काम की तरफ ध्यान नहीं देता। ये कंपनी जो है सारी दुनिया को इस वक्त गियर्स एक्सपोर्ट कर रही है और एग्रीकल्चर गियर्स एक्सपोर्ट कर रही है। ऐसे ये स्कॉन वॉल्व है, अनदर कंपनी, इसको हमने मेंटर किया, छोटी सी कंपनी थी, दे आर ए ह्यूज कंपनी राइट नाउ, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेल्व्स की। तो लेकिन ये इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये टू स्टार्ट विद ये वेंडर नहीं थे किसी ऑटो कंपनी के ना, ये नीचे नहीं काम कर रहे थे। कैडबरोज इज अनदर ग्रेट सक्सेस स्टोरी। पिछले साल या उससे पिछले साल बता रहे थे $80 मिलियन की इनकी एक्सपोर्ट थी और इनका सबसे बड़े कस्टमर यूनाइटेड स्टेट्स में। समा इंजीनियरिंग यहाँ कराची में आपके पास है, ह्यूज कंपनी नाउ, पैकेजिंग मशीनरी बना के एक्सपोर्ट कर रही है। सिग्मा 1996 में मैंने दिल्ली इनको विजिट किया तो 18 करोड़ की सेल थी, नाउ दे आर ए $1 बिलियन कंपनी राइट नाउ। तो ये हमारे मेहरान में दे हैव स्टार्टेड टेकिंग सम स्टेप्स। तो ऐसे ना एडवेंचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बोट्स एंड एक्सेसरीज, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने और भी रखी हैं यहाँ पे। टाइम तंग है तो मैं वरना इस पे बात करता, लेकिन ये छोटी आइटम्स हैं, सब असेंबलीज हैं, मीडियम टाइप टेक्नोलॉजी है जो आप लोग सारे उसको समझते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें। ये प्रेजेंटेशन मेरा उम्मीद है कि PAPAM अपनी वेबसाइट पे लोड कर देगा और आप इसको रेफ़र कर सकते हैं बाद में। ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग लाहौर में, कराची में बेशुमार काम हो रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये एक ताइवानी बंदा है, इसकी फैक्ट्री ही नहीं है सिरे से, ये सब चीज़ें सब कॉन्ट्रैक्ट पे मुख्तलिफ पुर्जे बनाता है और यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी कोई $50-70 मिलियन की सेल है नाइफ्स की फ्रॉम ताइवान। तो फिर ऐसे ही छोटी छोटी आइटम्स हैं जो कि आपके होंगे ऑटो के हैं, ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कई लोग आपके यहाँ बना रहे होंगे लेकिन वर्ल्ड मार्केट में नहीं निकलते। ताइवानी ऐसी चीज़ों को लेके वर्ल्ड मार्केट में निकले हुए हैं। तो इसलिए यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। जब तक आपका अपना ब्रांड और लोगो नहीं होगा तो उस वक्त तक आपका ये खेल आगे स्टार्ट नहीं होना। तो प्लीज़ थिंक अलॉन्ग दीज लाइंस। और कई दफ़ा ये काम आप कर सकते नहीं होते क्योंकि वो फैमिली बिजनेस में उस किस्म की वो थिंकिंग नहीं होती, तो लॉक इन हो जाता है। तो यू नीड समबडी फ्रॉम आउटसाइड टू कम एंड गिव यू सम हेल्प। अगर आपने ये मूवी ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। तो पिछले साल जब यहाँ लाहौर में हुआ था तो ये माइंडसेट की बात है। मेरी कोशिश थी कि मैं अपने भाइयों का माइंडसेट चेंज कर सकूं। तो वो उसी ख्याल के साथ फिर मैंने ये किताब लिखी। अगर आप में से किसी ने ना पढ़ी हो तो इसको आप ज़रूर पढ़िए, दराज पे मौजूद है। और जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते ये अगला काम होना नहीं है और फिर रोते रोते ज़िंदगी बसर जाएगी। तो आप थोड़ी देर के लिए ना आप लोग इंजीनियरिंग छोड़ दें, अपना फ्यूचर जो है ना उसको इमेजिन करना शुरू करें। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जिसको आप बाद में जाके देख सकते हैं। तो वैसे हम लोग PMX में काफ़ी किस्म का काम कर रहे हैं आप जैसी कंपनी को प्रिपेयर करने के लिए। तो आज की शाम गुमनाम वेंडर के नाम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। For our next speaker, I would like to invite Mr. Daniel Malik from Master Changan Motors, who took leadership at a very young age in a challenging market and has taken the company to new heights. Recently made the achievement of exporting SUVs. So please welcome Mr. Daniel Malik. Thank you to all of you for being here today. Can we have a big round of applause for the PAPAM team, who's done a very, very good job. And Rahman Saab, thank you for setting all up for us. मैं आज आप सबके साथ I would like to talk to you about and share our experience at Chang'an regarding sports. And I want to share just that personal journey जो हमने ली है from conception
to where we are today in a very open and transparent manner. So let's start with the Pakistan potential. सही है, आप सब, मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, अनटैप पोटेंशियल है, एंड ये पोटेंशियल क्या है और इसको हम टैप कैसे करेंगे, सही है। तो 2017 में जब हमने when we started this project, we, at least I really believed and still do believe in the Pakistan potential. Now, what is the Pakistan potential? It is our young population. So yeah, we have an extremely young population and a very large population. Now, it's important कि हमारे पास लोग बहुत हैं, young भी हैं, energetic भी हैं, तो ये untapped human resource potential है पाकिस्तान में। वो दूसरी बात है कि उन लोगों के पास buying power है या नहीं है, एजुकेशन है कि नहीं है, टेक्निकल स्किल्स हैं कि नहीं है, बट लोग हैं, सही है। सो दैट्स वन पार्ट। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्री पोटेंशियल। सो पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लोएस्ट मोटराइजेशन रेट्स इन पाकिस्तान, in the world. We rank at 154 with 17 vehicles, including two-wheelers per 1,000 people. So again, on the auto industry side, there's a huge potential upside when these individuals have the buying power to purchase vehicles. And that buying power is linked to the GDP per capita of every Pakistani. So today we are at $1,471 is the GDP per capita. And we were, when the auto market was reached its highest levels, about 320,000 per year, we were at 1,597. So we've come down since then. But the point is that at $2,000 per capita is when the auto market booms globally. So even India is not there yet. And we're at about 1,400. As soon as we hit 2,000, that's when things will really, really pick up. Just as a reference point. Now, if we look at Pakistan's auto industry, we can see throughout history, it has booms and busts. And these booms and busts are directly related to interest rates. So interest rates go up, auto industry comes down. It's related to the election year, and it's related to devaluation. So these 3 or 4 things directly impact the auto market. But what we can see is the highs, every time it goes down, it recovers sharper. So right now we are at 162,000. We closed fiscal year 23, and we are expecting this to be a challenging year as well. We forecasted 150,000 units total. But then we expect a gradual rise in the industry. Now, why is this important? This is important because the market locally is there. We have the young people. We have about 70,000 new car buyers entering the car buying segment every year. So the market is there. The people are there, and we need to capitalize on this market first. We are talking about exports, but it's very important to build the local market to get, which I'll tell you later, to get the economies of scale in order to export. So pehle we need a stable base to work on. Isse aage, we have a strategic location. What does that mean? We keep talking about Pakistan having a strategic location, especially for the southern part of China, which is landlocked, the Central Asian states, that we can provide them with this warm water port access. And that's why Pakistan and the CPEC project was pretty much the crown of the Belt and Road Initiative. So with this potential of Pakistan, then another big potential that we have is our untapped natural resources, all the way from iron ore, copper, gold, and the list goes on of untapped natural resources, which are going to be extremely important moving forward when we look to export, because we are not even making auto grade steel in Pakistan. So we need to be making those input
we need to have the input raw materials locally. We need to make those input raw materials first in order to think about exporting. So these are very, very important factors. We have members of the government here as well. So just to highlight, remind everyone, this is the groundwork that we need to do and the potential Pakistan has. So let's not forget that. So what we did at Chang'an is we took this potential and we pitched it to Chang'an in 2017. Okay, and we said, look, आपके पास right hand drive production base नहीं है. China is a left hand drive market. This is the potential of Pakistan, and you please come to Pakistan, work with us, and invest in Pakistan and make this your right hand drive production hub. So from inception, we had this vision of taking CPEC forward, or thinking of CPEC 2.0, and pitching Pakistan as a right-hand drive export hub. So that was the initial pitch from day one. We were, a lot of hard work and a lot of luck came together, and we conceived Master Chang'an Motors as a joint venture with Chang'an. Now, the important thing here was this was Chang'an's first joint venture outside of China in their history. So it was something new for them. It was a learning experience for them, and we were both learning and growing together. My father started the foray into the auto industry from making auto parts, and I've learned a lot for him, and then he's guided me a lot. And the focus that he always had was on localization from day one, because that's what he knows best. And our focus as a company is to localize as much as possible. So as a new entrant, I'm proud to say that in certain models, we have achieved significant localization thanks to all of your help. So thank you very much. So, and being part of that journey with us. And again, localization is the tool we need to bring the cost down in order to export and be globally competitive. So these are the things we can do. Now, after we reach a point of pricing to be globally competitive, we thought, okay, what can we do differently to do value addition? Okay, when we are looking at countries in Africa, smaller markets, the numbers are not that big, but it's these companies that we're looking to work with, they're not very big. So what we're doing is providing them value-added services. Okay, what are those value-added services? We built an in-house dealer management system. So this is an IT system that we have that we can upsell and provide as a value-added service to our export partners. Another thing we did was from day one, all the branding, marketing, communication, and brand assets that we made were of international level. They were all in English, so we could repurpose them and reuse them for the export markets. And then another thing we did was set up a training center to train and equip their technicians and provide technical training for after sales and product, and also developed local accessories that we can upsell in international markets. So these were the value-added services we did. On the regulatory side, we've been working closely with the government, but a few things that are extremely important to highlight is strategic free trade agreements, especially for right-hand drive CBU markets. Incentives and subsidies. Today, we are competing with the likes of China, with the likes of Thailand, with the likes of Japan in terms of exporting vehicles. And we need to be competitive. I know the government does not have much money, but instead of subsidies, incentivize by providing us lower duties, lower taxes on stuff that we are importing as well. That would really help make us cost competitive. And again, political stability and long-term consistent policies are key to making this possible. And moving forward, I just want to highlight that once we did all the basic work, Chang'an chose us to launch their vast ocean strategy. So this was at Shanghai Auto Show this year. That's me, and Chang'an invited us to launch their vast ocean plan. Chang'an and China was normally always inward focused on the domestic market, and now they've decided to go global. And we're happy to
be a part of that journey and global supply chain with them. The vast ocean plan means that by 2030, Chang'an wants to enter 90% of global markets, invest $20 billion in research and development, and build an innovation team of 10,000 individuals. So we're supporting them on Asia Pacific and the Africa side in helping them achieve this target. We started off with our first export to the Oceania region in May 2022, and recently we sent our first lot of 14 Ocean X7 units to Africa. So these were the 2 steps we've taken so far. We look forward to working closely with the government. We look forward to working closely with each and every one of you to make this dream of exporting vehicles from Pakistan a reality. This is a quote of mine that I wanted to share. These are tough times in the auto industry, very tough. This is the first time I'm seeing it. I'm sure many of you have seen it before. Tomorrow is much more difficult, but the day after is beautiful, and most people die tomorrow evening. So please, let's not give up hope, and let's look forward to tomorrow evening. Thank you. If we can have 1 or 2 quick questions from the audience. 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये है कि एक्सपोर्ट आपने 14 गाड़ियाँ की हैं अभी ओशान की, तो व्हाट इज़ योर टारगेट फॉर से दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर? दूसरा ये कि आपकी लोकलाइजेशन परसेंटेज जो है वो इस वक्त क्या है और आगे आपके टारगेट्स क्या हैं फॉर नेक्स्ट ईयर? वेरी गुड क्वेश्चन। जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स दिए हैं हम वो माइंड में लेके चल रहे हैं इस वक्त, विच इज 2%, 4%, 6%, 8%, because those are the targets we've also pitched to Chang'an. Those are the targets we are pushing for and we are trying to achieve. We will, after these units, we'll be working to assess the demand and hopefully get a better feedback. The units are landing in the next 1 week. So we'll be doing product clinics, market research, and assess the demand. And then I'll be better able to share more on terms of the business. Different products have different levels of localization. Carvan, which is the first product we launched, is reached about 30% localization. Allswin is about 15%, and Ocean is only the batteries localized because it's the newest product that we have. So we have a localization plan for each one of them, and inshallah, with your support and with everyone's support here, we'll further localize as much as we can feasibly. I would like to call upon stage Mr. Amir Allahwala. He is the CEO of Technopack, a very visionary old member of our PAPAM as well. He recently diversified into the mobile phone business as well. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir Allahwala. I'm representing Techno, and I want to thank everybody for setting up this symposium where we could learn from people like Imtiaz Saab and others on how things are moving on and what are the strategies that we all need to adopt to avoid becoming the Gumnam vendor. I think this term needs to stay with us at all times. Being a Gumnam vendor is not an option. So how do you create a space for yourself as a company, as a part manufacturer? So I've just put together a few slides and I'd like to share them with you. Diversification is the way forward. There is no path to success without an element of risk taking. If you restrict your business activities to one product, to 1 or 2 OEMs, and to the domestic market, you will definitely die. Because this is what my friend Sharik Sohail explained to me about 15 years ago. But let me talk about diversification first, and then I'll explain his philosophy. So diversification is expanding a company's operations into new or unrelated products, services, markets, or industries. Mainly, it means that you have to step out of your comfort zone. You need to go into areas which are unknown. You take the risks of doing things that you don't know will work 100% or not,
but you step out of the area where you feel comfortable and see what happens. Life is a game, right? So you must play it aggressively. So going back to what Sharik Bhai said about 2 decades ago, what is a typical life cycle of an auto parts manufacturer? This is what happens. There is continuous pressure from the OEMs to reduce costs and prices. They will push you every year, every quarter, every half year. At every time that you go to claim a cost increase, they will tell you to reduce costs, become more efficient, optimize your operation, and don't come back asking for a price increase. The price breakups between OEMs and vendors are designed in such a way that they freeze your profits and various costs. So, for example, a project starts, a vehicle is launched for 5 years, the profit would be frozen at a certain exchange rate, and then 5 years later, until a period of 5 years, the absolute amount of profit would be given as part of the price breakdown. So this means that your profitability as a percentage of your sales is going down every year. The vendor is ultimately absorbing all these costs, and then the supplier, this part manufacturer, unknowingly starts to eat into the company's capital. And then there is कि यार ये OD खत्म क्यों नहीं हो रही, ये पैसे क्यों नहीं है, LCs रिटायर नहीं हो पा रही. Normally part manufacturers का finance पे इतना ज़्यादा focus भी नहीं होता, तो उनको पता भी नहीं चलता. They just don't know what is happening. And then ultimately, if they do not innovate or diversify, their business would die. Slowly, 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 it would finish and they would turn into what Imtiaz Bhai said is a gumnam vendor. So what do you do? There are different types of diversifications. One could offer, if you're making a product, you would go to another OEM, try to develop a larger base of customers. You could also develop new product categories for current customers. And this has happened. People who were in sheet metal have gone into plastics, or plastics have gone into assemblies, and so on and so forth. There are always opportunities to diversify in terms of new products for the same customer. Then, this is the more difficult part. Target international market with your current product category. Like we've seen Mashood work very hard trying to export his sun visors and other plastic components, interior products. Similarly, we have seen other vendors who have, like Nabil Hashmi is one, and there are many others. I can't name all of them, but they have adopted a conscious strategy that we have to branch out of this country. We have a product, we have the capability, we have learned the business of manufacturing with good, best manufacturing practices, and we now can initiate going to the international market, but it's a very tough journey. Export is very tough. Or one could go into an entirely new industry where the current skills that you have learned can be applied. You see, Imtiaz was very right. We are very lucky in the sense that we have had a chance to work with some of the top companies in the world. So let me just talk about that a little bit more. So when we become a part manufacturer, there are some intangible assets that we get as a gift. First, we develop a strong company profile, because if you are working with the Toyota, Honda, Suzuki, and you have them on your company profile as your reference customers, it adds credibility to your operations. It helps you to create joint ventures to bring other foreign companies to Pakistan. Then you are able, or in fact, you basically, your organization is based on patience, perseverance, and determination. I mean, when you go to an OEM for development of a part, it sometimes is a cycle of 18 months from the start of development until the start of mass production. You need to be very patient. You can't get frustrated. These are very good qualities to develop. And you develop perseverance and you develop the determination to succeed, because there are obstacles, technical obstacles, commercial obstacles. So you
you create that quality within your team, and you absorb the best practices from Japanese and Korean customers. So if you're working with Toyota, they will force you to improve. If you will not improve, they will force you. They will force you more. They will do everything in their power. They won't let you go, but they would force you to improve. And that, I think, is the job of a good teacher. We must appreciate it as being one of the gifts from the automotive sector. And then in this whole process of continuous improvement, every company develops an experienced and trained groups of managers and technical teams, and a culture of continuous improvement and cost reduction. So there is this, you are never comfortable. When you are working for a OEM, there are always things that will pop up. It will always keep you on your situation, will always keep you on your toes. And basically, you are able to survive or negotiate under pressure. Now, where are the opportunities? Basically, I want to focus on the opportunities of moving from from the auto sector only. I want to focus on what are the opportunities that lie in other sectors of the industry. Because when you learn the best manufacturing practices, the next step is try and apply those skills and abilities into other sectors of businesses and manufacturing. So what we can see here is there is a very big opportunity, and Daniel touched upon it. China is the second biggest economy in the world. And they are growing, they have grown to a level where now for them labor costs are a problem. So currently the average labor cost in China is about, the minimum wage is about $700. $700 per month for an average worker. And this basically means that their costs are rising. And then another factor is the USA has applied up to 25% duty on made in China products. So the Chinese are very worried. On one side, their costs are going up. On the other side, they are facing excess problems to the US market, and they are looking for alternate production bases. China cannot invest to make in India because of their geopolitical tensions. So what do? They are branching out into Vietnam, Cambodia, and Laos. But the ideal partner for them should be Pakistan, because we are their iron brothers. And this is what they believe. It's not what I'm saying. They also believe that Pakistan can avail this opportunity for making JVs in labor-intensive industries. And there are many: auto parts, electronics, footwear, apparel, clothing, and toys. So when we talk about exports, Imtiaz Sahab, you should also maybe look into sharing ideas with people on how to bring these big Chinese companies to work together with local partners in Pakistan. Then we had the knowledge and confidence to apply the best practices that we had learned from the auto sector. There is no doubt that our level of knowledge was enhanced due to our interaction with these automobile companies over the last 20 years. So very interestingly, in the beginning, we had 11 Chinese experts, and China sent them to look after every part of the organization. They had one Chinese manager. And within a period of 2 years, our Pakistani engineers have taken up all the key functions. Out of 11 Chinese, 10 have been sent back to Japan. So each one of them used to cost $5,000 a month. And now we've been able to eliminate that cost. And very interestingly, Transient Techno is the best performing transient plant, meeting all KPI targets that are set by the headquarters. So this is quite amazing. I think all of this has been made possible by the valuable experience that we have been able to acquire from our history in the automobile industry. So, as a conclusion, our OEM customers are our best teachers and trainers. We might not like them. In fact, we despise them at times. They are a teacher and a trainer for our organizations. And let's leverage this training to diversify into other sectors. So
The key point is not to move out of the auto sector. I'm not in any way propagating that. What I'm saying is we must stay with the auto sector, but as our future generations, our next generations enter business, we should look into other areas of business activities. Thank you very much. I would request from the audience if anyone has any questions, a quick question, one or two. Okay, please. Can you please give him the mic? आमिर साहब, इट इज़ बिलाल हुसैन फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्डर. आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको आपने ये भी बात की कि उनके बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली. तो अच्छा, बिजनेसमैन जो आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, वो डाइवर्सिफिकेशन करते हुए देखे गए हैं, वो प्रॉपर्टी बिजनेस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चले जाते हैं अपने वो बिज़नेस ख़त्म करके. जो ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है प्रॉपर्टी को देखा गया है इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, तो उस तरफ मूव कर जाते हैं. तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेसमैन निकल जाते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं जो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है? जी, मेरा जो व्यू है इसमें थोड़ा सा ज़रा ख़तरनाक है, लेकिन मैं बात बहरहाल कर देता हूँ. मेरे ख्याल में हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो बेसिकली बड़ी हद तक लेथार्जिक हो चुके हैं. हम किसी भी कारोबारी आदमी की बात करें तो वो रात में 1 बजे से पहले सोता नहीं. अगर नेक है तो फजर पे उठ के फिर दोबारा सो जाता है और 11 बजे से पहले कोई काम पे नहीं पहुंचता. ये जो बिज़नेस एक्सपेंशन है ये बहुत एफर्ट मांगती है, इसमें बहुत रिस्क्स इन्वॉल्व हैं. एंड एट द सेम टाइम दुनिया में इकोनॉमीज़ जिन्होंने ग्रो किया है और जो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसेस ने ग्रो किया है वो बड़ी अनथक मेहनत करनी पड़ती है. तो हमारे यहाँ तो सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप 2-4 प्रॉपर्टीज़ ले लें और उसके बाद उनकी कीमत बढ़ती रहे. तो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. Business is all about taking risks. Business is all about creating value. Business is all about generating jobs. Because once again, I want to say it is not about the money. We need to get out of this mindset that it's about accumulating money. Money is, after a certain stage, everybody is at the same level of lifestyle. But the important thing is that we need to play this as a game. I think in our business community, there is a certain level of insecurity of losing out, insecurity of a loss. ये ना हो जाए, ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान ना हो जाए. तो एक सर्टन फियर है. आई डोंट नो व्हाई, बट देयर इज अ सर्टन फियर दैट वी विल लूज आउट, वी विल गो बैंकरप्ट, वी विल सफर अ लॉस, समथिंग लाइक दैट. एंड आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव पॉजिटिव थिंकिंग एंड integrate yourself with other countries. And I can tell you, this is not only in labor intensive industry, in agriculture, in aquaculture, the Chinese companies are dying to work with Pakistan. They are really very, very keen, and in fact, from meat to red chili to potatoes to so many things, they have demands that we don't have the capacity to meet. So there is a lot of work to be done, brother. But the problem is कि काम करना पड़ता है, काम करने से होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से नहीं होता. ना आमिर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डाइवर्सिफिकेशन में एक लफ्ज़ यूज़ किया, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स. सो आई वाज वंडरिंग दैट व्हाट डू यू रियली मीन. ईदर यू आर लेइंग एम्फेसिस ऑन अनरिलेटेड और यू आर लेइंग एम्फेसिस ऑन अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स और यू आर लेइंग एम्फेसिस ऑन ओनली प्रोडक्ट्स. That's what I want to say. And another thing to your some of the comments I will say. With Chinese, even a few days back, I had a big session on the 5 pillars of the whole CPEC and all that. I think here also I would say you have to improve your understanding about the dynamics of the whole business in between Pakistan and China. You would fairly take note of the very fact that today the exports from China are 28.1 billion. So if you take the stock from 2006 to up till now, we are the sole loser, but that is another discussion. But मैं चाहूँगा कि आप ये जो unrelated का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा it worries me, or let me also appreciate for appreciating the OEMs. I'm saying in excess to what was my expectation. Ji, sir, I'm just actually very thankful for what you said. I always appreciate the OEMs. We may not like them, as I said, and also I said we may despise them at times, but I appreciate them because they are the ones who, when I started my career, whatever I have learned is I've learned from Suzuki and Toyota and Honda. So we can curse them as much as we want, but the bottom line is sometimes you're not happy with your father also.
So it is their job, and what they're doing is for their own best interest. And what we need to do is to try and grow with them, but then at the same time also step out of that area of comfort. Now, the second thing about the unrelated product, what I mean is when you learn the best business practices, when you learn the documentation, you learn the quality controls, the production system, your supply chain management, you can do anything. I mean, when even what we are trying to do is go into setting up a vertical for agriculture. So China needs around 500,000 tons of red chili every year. Why can't we produce it in Kundri and process it and export it to China? And the third point, what I want to say, sir, is that why are we a loser compared with China? I can give you my view on that. We are a loser because we acted like a loser. The FTA that was created between China and Pakistan, now I can understand what happened. China took concessions from Pakistan on electronic products because that was their strength. And you know where they gave us the concessions? On agriculture products. If red chili is imported from Pakistan to China, the rate of duty is virtually zero. If it is imported from India, the rate of duty is about 20%. So what they did was they gave us an opportunity. Please go back. You are a country with a lot of land. Please produce and export all kinds of agriculture products and livestock products and meat, and we will buy it from you. So we did not do our job. It was a fair game. We did not do our job. And I tell you, sir, we are where we are because we have not done our job. Lazy ho gaye. Our top 2% people are comfortable. Nobody cares about the rest. बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं वो चल रहे हैं. But that mindset needs to change. काम हमें करना है. We are the top 2%. We need to work hard and lead all the remaining 241 million people. That 241 million people, every big company in the world cannot ignore Pakistan. मगर हमारा पैसा कहाँ है? दुबई में, लंदन में, हमारा डॉलर में, लॉकर्स में. ये हम we have to lead this process. We'll continue with our next speaker. The next speaker is Mr. Ali Khizr, who's a seasoned economist and a business analyst and is a leading columnist of Pakistan. May we please welcome Mr. Ali Khizr. Thank you for the invitation, and it's a great pleasure to listening to some of the veterans, Imtiaz Saab and the new entrants, the Danial and the entrepreneurial spirit of Amir. So it's good to see all this, and to set the tone is so Pakistan automobile industry is having a love and hate relationship with the people and with the policy makers as well. I mean, when you talk about different policy makers, when you talk to the economists, most of the free market economists think that the automobile industry should not exist in Pakistan. वो कहते हैं ना कि 40 साल से जो है वो फीडर पी रहे हैं और अभी तक वो जो है वो छोटे से बच्चे हैं. They use that infant industry argument कि जी हमें प्रोटेक्शन देते रहे. So we started producing Suzuki जो है जब उसने जब पाकिस्तान में आया था, it was I think in late 1980s that we got those Toyota and Honda coming up in 90s. और फिर उसके बाद वो 95 में कोई डिलीशन होना था, फिर 2005 के अंदर कुछ होना था, फिर और ये चीज़ें चलती नहीं और ना डिलीशन हुई, ना लोकलाइजेशन हुई, ना कोई नई गाड़ियाँ आई और पाकिस्तान के अंदर वही 3 जापानीज़ गाड़ियाँ 4, 5, 6 मॉडल बनाती रही. सो 2016 में जाके वी गॉट सम न्यू एंट्रेंट्स कमिंग अप एंड ऑल दैट, बट उनके आने के बाद भी आज प्रॉब्लम वहीं पे है कि लोकलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही, क्या हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है नहीं जाना. इंटरेस्टिंगली इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी जो पिछली पॉलिसी थी 2021 से 26 के दरमियान, उस पॉलिसी में जब वो हाइब्रिड के ऊपर वो कुछ कंसेशन मांग रहे थे, तो उस वक्त के चेयरमैन ने जनाब उनके अंदर बीच में डाल दिया कि जी आप फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे. अच्छा जी, अगर 2000 पहला साल जो था उसमें 0% एक्सपोर्ट करें, जो दूसरा साल जो भी गुजरा है 2022-23 का, उसमें आपकी जितनी इंपोर्ट कोटा है उसका 2% एक्सपोर्ट करें, फिर 4%, 6%, 8% और 10% पे जाएं, और फिर अगली पॉलिसी आएगी तब देखेंगे. तो उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कंपनी है
ऑटोमोबाइल के अंदर, उसकी तकरीबन साल की इंपोर्ट जो है वो $400 मिलियन की है, दैट्स $400 मिलियन। उसका 2% जो बनता है दैट इज़ $8 मिलियन। उसको पाकिस्तान के रुपयों में आज कन्वर्ट करें तो वो 20 करोड़ रुपया महीना बनता है। 20 करोड़ रुपया महीना इतनी बड़ी कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, तो फिर उसकी कंपेटिटिवनेस या उसकी पोजिशनिंग के ऊपर सवाल तो उठते हैं। सो दीज आर द लेजिटिमेट क्वेश्चन एंड ऑल दैट। और यहाँ पे अब मैं दिस इज वन क्वेश्चन आई लाइक टू रेज इन विद इन माई थिंक कि यार इसको हमें आगे करना क्या है, कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है और पाकिस्तान में ये competitiveness क्यों नहीं आ रही, हमारे यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो रही। तो पहला आर्गुमेंट जो दानियाल ने भी बात कही थी कि जी मार्केट पाई इज़ टू स्मॉल, कि जी हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1990s ऑनवर्ड हम अब जितने इंसेंटिव देते रहे हैं फॉर अबाउट 3 to 4 decades, आज भी हमारी इंडस्ट्री competitive नहीं है। So volumes are small or fragmented. We don't have any one model or any one variant where we have a critical mass. Suzuki ने एक गाड़ी में बनाया था critical mass, तो हम ही मीडिया वालों ने बोल के साहब ने कि यार ये तो गाड़ी में कुछ करते नहीं करते, उन्होंने वो गाड़ी बंद कर दी। So इंडिया भी वो मारुति से चला था, वो जो हमारी मारुति थी मेहरान, वो पता नहीं कहाँ गई, तो वो ख़त्म हो गई। और आज हमारे पास 3 एंट्रेंट की जगह कोई 10-12 एंट्रेंट आ गए हैं और क्रिटिकल मास किसी एक गाड़ी का नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज इवन बिकम मोर चैलेंजिंग। ठीक है जी। सो द प्रॉब्लम इज कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब नहीं आएगा, जो उनका आर्ग्यूमेंट है, तो फिर एक्सपोर्ट कैसे होगी। और पाकिस्तान में यही होता है, दानियाल ने जो बात की कि इलेक्शन साइकिल है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इंटरेस्ट रेट है, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग कि जब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, सो और वो यूजुअली जब इलेक्शन साइकिल से पहले एक्सुबरेंट फिस्कल स्पेंडिंग होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी लैक लस्टर होती है, तो दैट इज फॉलोड बाय द शार्प डिप्रिसिएशन ऑफ पीकेआर एंड शार्प इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, and that bodes extremely bad for the auto industry. उसकी एक्सटर्नैलिटी ऑटो इंडस्ट्री पे ऐसी होती है कि जो डेवलप हो भी रही होती है वो नीचे चली जाती है। सो दिस इज व्हाट वी सी, दिस इज व्हाट वी सी फॉर द पास्ट 30 odd years. So what they say is the critical mass is about 500,000 units. वो जो $2,000 की जो पर कैपिटा इनकम है, उसके साथ वो 5 लाख का आप ये भी बात कर सकते हैं। So what is needed to be done? Shall we stop giving the incentives to those OEMs, let them compete with the open market कि हम CBU को import करें कि नहीं? That is a question to be asked, and that is a very valid question where we are sitting today. So one option is open import, so industry can compete with CBUs. Again, I told you कि आप 50 तरह की गाड़ियाँ आएंगी, हर तरह की हाइब्रिड मॉडल आएगा, जिसने ईवी मंगवाना है, जिसने गैस नजर मंगवाना है, जिसने जो मंगवाना है मंगवाए, जो ट्रक मंगवाना है वो मंगवाए। बट क्या ये हम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? जो आमिर भाई कहते हैं कि एक गाड़ी बनती है तो 5 नौकरियां निकलती हैं, तो वो 5 नौकरियां चली जाएंगी। अच्छा जी, जॉब लॉस का हमें इशू है। अच्छा, क्या वाकई सारी 5 निकल जाएंगी? जो वेंडर की नौकरी है, जो OEM को वेंडर बना के देता है, वो नौकरी जाएगी। जो OEM की अपनी नौकरी है वो जाएगी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस वाली तो नौकरी रहेगी। ठीक है, वो 3S सेल सर्विसेज वो भी चलती रहेंगी। शाहनवाज कब से मर्सिडीज बेच रहा है, ऑडी वाला यहाँ पे बेच रहा है, तो सिर्फ अमीरों की गाड़ियाँ यहाँ पे जो है वो CBU में चलती हैं, तो चाइनीज़ वाले भी अपने बना लेंगे, मिडिल क्लास की गाड़ियाँ भी बनना चल जाएंगी, वहाँ पे भी नौकरियाँ आ जाएंगी। आफ्टर पार्ट्स, मैकेनिक्स एंड ऑल दैट, वो 2-3 नौकरियाँ तो रहेंगी 5 में से, चले 2 नौकरियाँ चली जाएंगी, 3 शायद रह जाएंगी। ठीक है जी। दूसरा, वेंडर, जो इम्तियाज साहब ने कहा या ये आमिर ने अभी कहा कि भाई वेंडर को अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। वेंडर अपने कंफर्ट जोन से निकलेगा, इंजीनियरिंग के और गुड्स बनाएगा। भाई आप इंजीनियरिंग गुड्स बनाते हैं, आप गाड़ियों की CKD बना सकते हैं, तो आप जो है डीप फ्रीजर की भी बना सकते हैं, आप फ्रिज की भी बना सकते हैं, आप AC की भी बना सकते हैं, आप
और 100 किस्म के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। तो जब आप पे ये पड़ेगी कि वो OEM ही नहीं रहेंगे, तो आप खुद ही ढूंढेंगे कि वो क्या रास्ता है। आज भी आप इतने लोग हो गए हैं, मार्केट का साइज 2 लाख से नीचे है गाड़ियों का, तो आपको तो बाहर जाके करना है सर्वाइव करने के लिए। सो वेंडर्स दूसरी जगह पे मूव कर जाएंगे। कंज्यूमर के चॉइस से पूछो, अगेन कंज्यूमर इज बेटर ऑफ, 100 ऑप्शंस होंगी उसके पास। ड्यूटियाँ पे जब आप ड्यूटी कम करेंगे, गाड़ियाँ अफोर्डेबल हो जाएंगी। दुनिया भर में जो सबसे सस्ती गाड़ी बनाता है, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट गाड़ी बनाता है, आप वो ज़्यादा मंगवाने लग जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा? देयर विल बी मोर प्रोलिफरेशन ऑफ कार्स ऑन रोड्स, ट्रैफिक कंजेशन होगा, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी, रोड के ऊपर कंजेशन होगा। अभी मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ पे स्मॉग का सीज़न है, वो स्मॉग और बढ़ जाएगी, आपकी रोड्स की वियर एंड टेयर और बढ़ जाएगी। आपकी गाड़ी के अंदर जो तेल डलता है, जो पेट्रोल डलता है या जो डीजल डलता है, वो पाकिस्तान की इंपोर्ट का सबसे बड़ा पार्ट है, वो इंपोर्ट और बढ़ती जाएगी। सो देयर आर इश्यूज इन दिस एज वेल। देयर आर इश्यूज फ्रॉम द कंज्यूमर साइड की जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती जब तक कि आप तैयारी ना हो आपकी। दूसरी ऑप्शन क्या है जी आपके पास, कि जी आप join hand and move toward generating exports and greater localization. So our OEMs और vendors और policy makers सब बैठ जाएं गठ छोड़ के और एक बैत ले लें कि हमने अब मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, हमने मार्केट नहीं ढूंढनी है। We need to generate the exports surplus, we need to create export, we need to sustain this country economy, we need to live for the youthfulness of this country। हमारी जो आगे वाले जनरेशन बच्चे हैं, उनको हमने अच्छा फ्यूचर दे के जाना है इन इंजीनियरिंग सेक्टर। तो उसके लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सबसे पहली बात, वो जो आपका SRO 656 है शायद, वो कि लिस्ट ऑफ पार्ट लोकली शुड बी अपडेटेड रेगुलरली। 2006 के अंदर वो जो एक पॉलिसी बनी थी कि जी हर 6 महीने बाद लोकलाइज पार्ट अपडेट होंगे, उससे हमारे जो पार्ट्स वाले जो इन्वेस्ट करते हैं उनको फ़ायदा होगा। वो 2006 बाद कभी हुआ ही नहीं। अभी जब ये नए प्लेयर्स आए दानियाल जैसे, और वो आए जब वो बड़े 3 लोगों को लगा के भाई ये तो मसला होने लग गया हमारे साथ, तो वो भी आए, तो अब वो अपडेट होने लग गया है। उससे वेंडर को फ़ायदा होता है कि भाई वो कोई टूलिंग पे इन्वेस्ट करता है, वो किसी चीज़ पे पैसा लगाता है, तो उसको पता है कि उसको एडवांटेज होगा, और OEM मेरे से ही आके लेगा, चाहे नया है या पुराना है, वो मेरे से ही आके लेगा। ये बहुत ज़रूरी काम है। सो OEM must use principle to create export market। दानियाल गया वहाँ पे चैंगन के पास, उसने कहा भाई तुम राइट हैंड गाड़ियाँ नहीं बनाते, तुम दुनिया में जितनी राइट हैंड गाड़ियाँ हैं उसकी मार्केट पाकिस्तान को दे दो। एंड दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एक्सपोर्टिंग some of their क्रॉस SUV टू अफ्रीका, और ये इसका पोटेंशियल है और आगे जाके बढ़ेगा। हमारे जापानीज तो कहते हैं भाई हम क्यों करें, हमारे 40-45 मार्केट्स और हैं, ये पाकिस्तान की मार्केट छोटी कैप्टिव मार्केट, लेट इट बी देयर। आज आपने वो 2% एक्सपोर्ट की कंडीशन लगा के उनका कोटा रोका है, तो जापान से लेके कोरिया से लेके पाकिस्तान में सब हिल गए हैं। और उस हिलने के बाद अब ये बात हो रही है कि वो प्रिंसिपल लेके ही बात हो रही है कि जी कैसे मार्केट बनाई जाए। एक गाड़ी जो है वो कालीन जो है वो इजिप्ट में बेच रही है अपनी गाड़ी का, तो कल को वो कुछ और भी बेचेगी, सुजुकी भी करेगी, होंडा भी करेगी, किया भी करेगी, होंडाई भी करेगी, चाइनीज तो कर ही रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का पुश जो है ना, गवर्नमेंट हैज़ टू शो रिजॉल्व टू दैट, यू डू इट और लीव इट, ये बड़ा ज़रूरी है। और वेंडर शुड एक्ट एंड प्रोएक्टिवली एंड एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। आप वेंडर्स को जो ये राजगार साहब ने कहा, इम्तियाज साहब ने कहा, राजगार साहब ने या आमिर ने कहा कि भाई वो चाइना के अंदर जो है वो मिनिमम वेज इतनी है, चाइना की ड्यूटी इस मुल्क से इतनी है, तो पाकिस्तान से ड्यूटी ज़ीरो है, वेज भी कम है, तो भाई चाइनीज़ को बुलाओ। ये देखें, ये चाइनीज़ बैठे हुए हैं पाकिस्तानी सूट में यहाँ पे, इन्हीं की टीम में। आप सबके साथ ये चाइनीज़ बैठे होने चाहिए यहाँ पे, हर वेंडर के साथ एक चाइनीज़ बैठा होना चाहिए, और उन्हें हाथ जोड़ के सर जोड़ के बैठना है कि हमने अपनी मार्केट कैसे बनानी है, ताकि 5 साल जब हम बैठे हों
तो हम ये बता रहे हो कि भाई मैंने अफ्रीका में ये मार्केट बनाई, मैंने मिडिल ईस्ट में ये मार्केट बनाई, मैंने साउथ अमेरिका में ये मार्केट बनाई, ये बात होनी चाहिए, दैट इज हैज टू बी डीम। तो दैट्स इट जी, ये टाइम अप हो गया है वैसे भी, तो दैट्स अ स्मॉल प्रेजेंटेशन, दैट्स अ फूड ऑफ थॉट कि हमें आगे कैसे जाना है, क्योंकि जो हालात है मुल्क के, अगर हम नहीं चेंज होंगे तो ये मुल्क के अंदर मुल्क तो रहेगा, गाड़ियाँ नहीं रहेंगी। थैंक यू। Do we have any questions from the audience? Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूद खान, फिज़र आपसे सवाल है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि हम 21 और 26 की जब प्रेजेंटेशन पॉलिसी बना रहे थे उस वक्त गवर्नमेंट के पास एक OEM आया, उसने कहा हाइब्रिड भी आप इसमें ऐड कर दें, तो गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि आप एक्सपोर्ट ऐड कर लें। तो एज ए इकोनॉमिस्ट आप मुझे ये बताइए, क्या ये मुमकिन है कि एक्सपोर्ट एक जस्ट वन डिसीजंस पे हम क्रिएट कर लें, वो भी इंजीनियरिंग सेक्टर में? पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो अभी मांडीवाला साहब यकीनन बयान करेंगे, मगर 75 ईयर्स में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डेवलप हुआ है इंपोर्ट बेस। तो ऐसी इंपोर्ट बेस इकोनॉमी को आप अचानक वन पॉइंट पे ले आए और एक्सपोर्ट कर लें, वो नहीं है। एक्सपोर्ट लीडरशिप से डेवलप होती है और गवर्नमेंट एज अ लीडर वो डायरेक्शन सेट करता है। मुझे नहीं लगता कि 75 ईयर्स में हमने कोई डायरेक्शन सेट की हो एक्सपोर्ट की। इम्तियाज भाई इज सिटिंग हियर, इज माय रोल मॉडल। इन्होंने 2005-2006 में एक्सपोर्ट्स की बात करना शुरू की, बट द हियर पापाम के कितने मेंबर हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया? नाउ द सवाल ये है कि एज ए इकोनॉमिस्ट आप बताएं कि इकोनॉमी में या 2021 से 2026 की पॉलिसी में ये जो न्यू OEMs बैठे हैं ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे? एक्सपोर्ट विजन की ज़रूरत है सर। आप एक्सप्लेन करें, क्या गवर्नमेंट के पास वो विजन है कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? पाकिस्तान दुनिया में ऑटो पार्ट्स की जो ट्रेड है वो 600 ट्रिलियन की है, वेयर वी आर, तो हमारा लीडर नहीं है। तो गवर्नमेंट हैव एज अ लीडरशिप टू प्रोवाइड विजन के अगले 10 ईयर्स या 25 ईयर्स में क्या हो। तो सिंपल मेरा सवाल यही है कि एज ए इकोनॉमिस्ट आप बताएं। दूसरा, पाकिस्तान इज लकीली 75-76 ईयर ओल्ड। इंशाल्लाह 24 ईयर्स के बाद हम 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन करेंगे। व्हाई नॉट वी कैन थिंक अबाउट कि यार हम एक विजन देते हैं अगले 24 साल में पाकिस्तान कैन बी डेवलप इंजीनियरिंग सेक्टर फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट एंड वर्ल्ड वाइड। जो हम देखते हैं, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ EV की, कि अगले 2030 में ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं। एज ए पाकिस्तान वी हैव वन विजन कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जर यूनिट पाकिस्तान में डेवलप करे। उसमें ये फोर्जिंग वाले बैठे हैं, शीट मेटल वाले बैठे हैं, रबड़ वाले बैठे हैं। वी हैव द टेक्नोलॉजीज, वी हैव द नॉलेज, वी हैव द एक्सपीरियंस। विजन नहीं है। अगर हम विजन करें कि हम एनर्जी सेक्टर को EV की इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जर डेवलप करके हम मुल्क में बनाएं कि पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाए कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर्स बनेगा बेस्ट क्वालिटी का। ये वो विजन है सर जिसकी वजह से हम आज भी मुश्किलात में हैं। और आमिर भाई सही कहते हैं, हम सो रहे हैं, हमें जगाने की ज़रूरत है और हम जागेंगे खुद। लास्टली मैं एक कमेंट्स आपको और दूं सर, WTO के बाद, WTO इज डेवलप बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने आपके लिए कहा कि यार टैरिफ बेस्ड सिस्टम ले आइए। सर हम जैसे मुल्क में रहते हैं, वहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, ये हमारे लिए फिजिबल था ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम कमज़ोर थे, इसलिए हम एक्सेप्ट कर गए। हम तो सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जब आप इंपोर्ट की पॉलिसीज़ दे देंगे ना, तो हम फिर इंपोर्ट ही करते रहेंगे, हम इनोवेट नहीं करेंगे, हम क्रिएट नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें हैं जो हमारी मिसिंग है। एज ए इकोनॉमिस्ट आई वुड लाइक टू प्लीज एक्सप्लेन। थैंक यू सर। सॉरी, टेक योर टाइम। थैंक यू। आपने पहली बात की कि जी गवर्नमेंट का विजन देना चाहिए, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा विजन जो है ये जो बैठा है ना इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ये विजन होना चाहिए। ये विजन जो इस कमरे में ये सारे लोग बैठे हैं ना, ये विजन यहीं से आता है। गवर्नमेंट को भी विजन आप ही लोग देंगे। एंटरप्रेन्योर विजन लेके आता है, वो एक प्रपोजल लेके आता है, गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी बनाती है। तो पहले तो ये जो है ना वो जो शटक हॉक जो है ना दूसरे के कोर्ट पे फेंकना छोड़ दें। अपने दरबान में जब तक नहीं झांकेंगे चीज़ें ठीक नहीं होगी। पहले ये बात बड़ी ज़हन में डाल लें। दूसरी बात आपने की 2021-26 की पॉलिसी में आपने 2% एक्सपोर्ट का कोटा दिया। क्या ये करना ठीक है कि नहीं ठीक करना? इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना चढ़ेगा कि 1990 के अंदर जो पॉलिसी आई थी, 1995 में डिलीशन होनी चाहिए थी, वो कितनी हुई? 2005 में जब टैरिफ बेस्ड सिस्टम आया था उसमें के 696 जो है उसको आज 6 महीने बाद अपग्रेड हुआ, वो 2022 तक क्यों नहीं अपग्रेड हुआ?
क्यों नहीं लोकलाइजेशन हुई, क्यों ना ये चीज़ें आ सकी, क्यों आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे, क्यों आपको और आपके ओईएम को जो आर्बिट्राज नज़र आता रहा आप उस पर कमाते रहे। अगर आप लोगों ने वो नहीं किया तो गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा एक पॉलिसी बनाई कि ये 2% एक्सपोर्ट करो, और उसने 4 दिन उसका कोटा नहीं खोला तो जापान तक आवाज़ गई है। जापान ने पहली दफ़ा सोचा है अपनी कंपनी को यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक्सपोर्ट के लिए तुम पॉलिसी बनाओ। तो उसका तरीका ये है, ये जो दीज आर कॉल्ड नेगोशिएशन टूल्स एंड गवर्नमेंट इज फर्स्ट टाइम यूजिंग इट्स नेगोशिएशन टूल। ये पहले करती नहीं रही है, वरना जापानी एम्बेसडर आ जाता है। चाइना से पहले हमारा सबसे बड़ा डेट जापान का होता था, अब चाइनीज आज एम्बेसडर आ जाता है, जापानीज एम्बेसडर आ जाता है। ये गरीब मुल्क जो कर्जों पे चलता है वो एम्बेसडर के आगे चुप होकर बैठ जाता है। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो दूसरी बात, अगर आप कहें कि क्या ये अंडर डेवलप की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप मुल्क है, उसने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई हमने गाड़ियां नहीं बनानी। दुबई इस वक्त दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, उसका कॉन्शियस डिसीजन है हमने गाड़ी नहीं बनानी। टोयोटा 40 मुल्कों में गाड़ियां बनाता है, 160 मुल्कों में बेचता है। पाकिस्तान अगर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में नहीं अच्छा तो फिर हम क्यों गाड़ी बनाते हैं? वही जो पैसा जो इंडस मोटर हबीब वाले या एटलस वाले या ये मास्टर वाले या लकी वाले या मियाँ मंशा निशात वाले जो गाड़ियों में डालते हैं, वो ऐसी इंडस्ट्री में डाले जिस इंडस्ट्री से फ़ायदा हो, उससे एक्सपोर्ट जनरेट हो, और गाड़ियाँ उसके पैसों से हम इंपोर्ट कर लें। अगर हमने गाड़ियाँ बनानी, अगर हमने 40 साल से एक इंडस्ट्री को संभाल के रखा हुआ है, तो हमें एक चांस देना चाहिए उस इंडस्ट्री को, ज़रा उस इंडस्ट्री को रिगर करना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री भी डेवलप हो। तो ये एक बुनियादी बात है, ये एक विजन की बात है। जो एक विजन एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, एक हिस्ट्री से आता है। तो वो मेरा एक नादा सा मतलब ख्याल ये है कि हमें थोड़ा सा ये पुश करना चाहिए ओईएम्स को और वेंडर्स को कि भाई तुम 40 साल से लगे हो, ठीक है, तुम्हें हम ख़त्म कर दें, उसके नुकसान है, नौकरियां लगी हैं कि वैल्यू चेन डेवलप हुई है, उसको बेहतर करो। अच्छा, मैं सबसे पहले तो खिज़र आपको आपकी बातें सुनी तो मैंने बहुत मरतबा है, यू हैव बीन आल्सो विद मी पैनलिस्ट एंड स्पीकर, और आपको मैं पढ़ता भी हूँ, और मेरा ख्याल है ये भी मैं अपनी एक वीकनेस एडमिट करूँ कि सबसे पहले आप ही को पढ़ता हूँ सुबह उठकर। अच्छा, मैं ये आपको थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा, एक आई विल ट्राई, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ अपनी अच्छी है। वो ये है कि देखें, जो आपने बातें कही, रॉ मटेरियल्स नहीं हैं और पाकिस्तान भी रॉ मटेरियल्स नहीं है जिनके बेसिस पे ही ये सारी वेंडिंग इंडस्ट्री चल रही है, ये आपने बात कही। लेकिन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं एक नॉलेज इकोनॉमी, और उस नॉलेज इकोनॉमी का बतदरीज उसको अपग्रेड करना, और उसी से आगे आप अलाइनमेंट बनाते हैं किस चीज़ की, इनोवेशन की। अगर ये चीज़ें इस मुल्क में जिस पे 25 करोड़ लोग रहते हैं, अगर इनको थोड़ी देर के लिए हम एब्सेंट करें, आपने ये सुना होगा कि कॉस्ट इकोनॉमाइजेशन हो रही है, आपने अभी बहुत सारे लोगों को सुना कि लोकलाइजेशन से कॉस्ट इकोनॉमाइजेशन हो रही है, बट कॉस्ट इकोनॉमाइजेशन से ज़्यादा यानी आई कंसीडर कि फंडामेंटल टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में यही होता है कि आप नॉलेज जो है उसकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस को अपग्रेड करते रहें। दैट इज़ द एडवांटेज को गाड़ियाँ बनाना, जो भी वेंडर्स हैं वो उस हवाले से मैं उनको देखता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 25 ईयर्स बैक ये G77 में आई वॉज वेरी मच एक्टिव। अच्छा, अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पे एयरबस, इम्तियाज़ रस्कार साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप भी सुने। एयरबस और बोइंग को एक पूरा इसको सेग्रीगेट करके पार्ट्स की प्राइस क्या है, नॉलेज की प्राइस क्या है, 51% 25 ईयर्स बैक दोनों की जंग थी 51 और 49 के ऊपर कि ये है कॉस्ट ऑफ नॉलेज। क्योंकि अब आपके कई आर्टिकल्स हैं जिसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल ये बातें की जाती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप चूँकि लिखते हैं और कुछ मेरा ख्याल है कि उन लोगों के बारे में ज़रूर लिखें जो कैप्टिव हैं। थोड़ी देर के मैं कहता हूँ कि मैं किसी को कहता हूँ, हमारे दोस्त को, कि यार आप रेडिएटर मार्केट में क्यों नहीं बेचते हो, वी आर अंडर ए कैप्टिव डायरेक्शन। तो थोड़ा सा एक लिमिटेशंस हैं, जिस लिमिटेशन को तोड़ने के लिए आप जैसे लोग, कि आपने जो बातें की वो अगर 2-4 और तकरीरें हो जाएं तो पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा रूलर आ जाए तो वो तो बिल्कुल ही बंद ही कर देगा इस सारे सिस्टम को। सो थैंक यू वेरी मच खिज़र। हाँ, थैंक यू जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये नॉलेज बेस बनाने की और उसको आगे कॉस्ट को उसको लेके चलने की ज़रूरत है।
देखिए, नॉलेज के लिए हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक और वो पूरा एक सिस्टम होता है, वो बनना चाहिए। आप देखें, यूरोपियंस देखें, वो या जापानीज़ देखें, होंडा को देखें, ये लोग किस तरह से डेवलप हुए थे। ये शौक था इन्हें, इंजीनियरिंग थी इनकी, जिसकी क्वेस्ट थी, जिससे वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज बन गई हैं। तो खैर वो पाकिस्तान में वो 70s में 80s में कुछ, अभी मैं देखता हूँ इंजीनियर्स अभी भी बैठे हैं आपकी इंडस्ट्री में, अच्छे लोग हैं, बट अब इस तरह से वो लोग नहीं आ रहे। हमारी इंजीनियरिंग क्वालिटी वीक हो गई है, हमारे यहाँ ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो गए हैं। तो उसका एक तरीका है, वो उसका तरीका ये आमिर भाई ने मेरा ख्याल है ये क्रैकडाउन किया हुआ है। ये चाइनीज़ को लेके आगे उन्हें एक इकोनॉमिक आर्बिट्राज भी नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ के ऊपर ड्यूटी वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, उनको इधर लाओ, वो स्पिल ओवर करो, वो स्पिल ओवर नॉलेज का आएगा और उसी से चीज़ होगी। आई थिंक इस तरह के रास्तों पे लोगों को ज़्यादा अब सोचना चाहिए। थैंक यू जी। अली साहब, आपसे मेरा 2-3 सवालात हैं। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ये बताने की या ये समझाने की कोशिश की कि जिस चीज़ के रॉ मटेरियल हमारे यहाँ नहीं है वो किसी ना किसी फॉर्म में इंपोर्ट हो ही रहा होता है, और हमें ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर इस सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान में ना कोई रिफाइनरी लगनी चाहिए क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, ना हमारे यहाँ कोई केमिकल प्लांट लगना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ सारे केमिकल्स बाहर से आते हैं। पीटीए बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े इंसेंटिव दे के हमने लगाया था, पैरादाइलिन सारा इंपोर्ट होता है। तो पाकिस्तान में फिर इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो आपको मालूम है 3.5% ग्रोथ रेट के साथ हम सिर्फ इंसानी पैदा कर रहे हैं, बाकी तो कुछ पैदा नहीं हो रहा। एग्रीकल्चर आउटपुट हमारी जो है वो ईस्ट पंजाब से आधी है और डेवलप वर्ल्ड से 1/4 है, तो वो भी हमें बंद कर देनी चाहिए। फिर सिर्फ बिल्डर ही रह जाएंगे, बिल्डिंगें बनाते जाते हैं और बाकी तो कोई काम पाकिस्तान में है नहीं। दूसरा, मैं आपको एक स्टैट बताना चाहता हूँ और पूरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, और ये मैं, आप मेरे साथ अगर बैठेंगे तो मैं आपको पूरी वर्किंग भी दूंगा। जो पिछला हमारा बेहतरीन, बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि बूम एंड बस्ट साइकिल्स पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल है। जो लेटेस्ट बूम था वो 2022 का ईयर था, 21-22 का ईयर, और बस्ट साइकिल अभी हमारी चल रही है। तो जो बूम साइकिल थी इसमें हमने तकरीबन 3 लाख गाड़ियाँ बनाई थी और कोई 22 लाख से 25 लाख मोटरसाइकिलें बनाई थी और कोई 30-40 हज़ार ट्रैक्टर भी बनाया था। इनका सारा रॉ मटेरियल, CKD, पार्ट्स, एवरीथिंग डाटा EDB का प्रोवाइडेड है। हमने $3.5 बिलियन की इंपोर्ट की थी, इसमें रॉ मटेरियल सारे शामिल हैं। और अगर उन्हीं 3 लाख गाड़ी और 25 लाख मोटरसाइकिल और 40-45 हज़ार ट्रैक्टर्स की आप वर्किंग करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन $8 बिलियन बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने $4.5 बिलियन की जो है वो फॉरेन एक्सचेंज सेविंग की है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है। अगर आप जो मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपने दुबई की और ऑस्ट्रेलिया की भी मिसाल दी, तो क्या हमारा कोई कंपैरिजन बनता है इन मुल्कों से? हमारे यहाँ भी अबू धाबी की तरह या दुबई की तरह इतनी तादाद में तेल निकल आए तो जो आमिर ने कहा कि हम 11 बजे तो काम पे जाते हैं, हम फिर मेरा ख्याल है 4 बजे जाया करेंगे काम पे अगर इतना तेल हमारे यहाँ निकल आए तो हमारे मुल्क के हालात ना ऑस्ट्रेलिया से मैच करते हैं ना दुबई से मैच करते हैं। दे आर ऑयल रिच स्मॉल मार्केट, उनकी अपनी मार्केट, उनकी अपनी आबादी के लिए वो जौन सा मॉडल चाहे इंपोर्ट करें। और दूसरी एक बड़ी पिक्यूलियर सी बात है जो कम से कम एज इंडस्ट्री हमें समझ में नहीं आती, वो ये है कि आप यूज्ड कार का मॉडल जो आता है कि जी हम सिर्फ यूज्ड कार मंगा लें, तो फिर हम टेक्सटाइल मिल्स भी बंद कर देते हैं अपनी। लंडे का कपड़ा तो बहुत मिलता है, हम मंगाएं ठेले, कराची का तो आपको शायद पता ना हो मगर पूरा लंडा बाजार है, हम वहीं से लंडे का कपड़ा ले लेके पहनना शुरू कर देते हैं। अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने क्यों लगाई हुई है? और टेक्सटाइल के अंदर भी अब तो आप 5 से 6 मिलियन बेल्स कॉटन उगाते हैं और 8 मिलियन बेल्स कॉटन इंपोर्ट करते हैं, तो देयर इज नो फिजिबिलिटी फॉर टेक्सटाइल एज वेल। सो वी शैल शट ऑफ द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान नाउ। थैंक यू जी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बात ये कि मैंने कहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन के एंड में ये सजेस्ट नहीं किया कि बंद कर दे। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग हाथ मिलकर डोले, हमने इंडस्ट्री को 40 साल चला ले, तो मेरी सजेशन पहले ये है, बट मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दिए।
आपने ऑस्ट्रेलिया की और उसकी बात की तो अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लें, वो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मंगवाते हैं। सो आप अफ्रीका के साथ मिलना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अब आपने लंडे की गाड़ी और सेकेंड हैंड कार की बात की, इस कमरे में मेरे ख्याल में सबसे हाथ उठवा ले, अच्छी गाड़ी मिल रही होगी सब सेकेंड हैंड ले लेंगे, लंडे का कपड़ा कोई नहीं पहनेगा। तो थोड़ा सा यार प्लीज़, ठीक है ना, वो इतनी भी वो नहीं बात होती ना कि लंडे का कपड़ा और सेकेंड हैंड गाड़ी बराबर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपने 8 बिलियन वर्सेस 38.5 किया है, उस 8 बिलियन में 40% जो है वो तो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। मतलब आप उसको कैसे डाल सकते हैं यार? आप इस तरह ना करें ना, बात तो अब वो एप्पल टू एप्पल करें ना, तो वो बात। बट आई एग्री विद यू, देयर आर सेविंग्स, आई एग्री विद यू, देयर आर लोकलाइजेशन, देयर आर एडिशन, बट हमने पॉलिसी क्वेश्चन करना है। और मेरा कंक्लूजन ये है कि 40 साल से हम इंडस्ट्री को लेके बैठे हैं, तो इस इंडस्ट्री को चलाना चाहिए, लेकिन ये इंडस्ट्री आर्बिट्राज के ऊपर चल रही है, इसकी थोड़ी सी निगोशिएशन करे, थोड़ी सी स्क्रू टाइटनिंग करे, ताकि आप लोग भी तो कुछ उसके अंदर आगे ग्रो करें ना, आप भी लोग उसमें कुछ जिद्दत लाएं ना, तो चीज़ें लेके आएँ तो आगे आएँ। जब नई ऑटो पॉलिसी आई थी उस वक्त आमिर भाई को बात पता है, वो इंडस वाले 2015-16 के अंदर हमें बुला के वो कितना कह रहे थे, उस पूरे कमरे में एक मैं ही बंदा कह रहा था कि नई गाड़ी आने तो मुल्क में ऑप्शन आएगी और मार्केट इंडस्ट्री बढ़ेगी। आपको याद है ना 2015-16 की ये बात है, आज आप देख लें कब की बात है। तो ये बात नहीं है, ये जिस तरह से आप उसको कह रहे हैं। और टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल हमारे यहाँ 500 साल से चल रही है। टेक्सटाइल में हमारी वैल्यू एडिशन में उसमें हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो उसको आप गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में गाड़ियों और टेक्सटाइल का बड़ा फ़र्क है। बाकी आपकी बात ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारा साइज़ बड़ा नहीं है, हमें साइज़ बड़ा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे स्टील भी होना चाहिए। स्टील मिल बनी हुई थी, ये कब से बंद हुई, उसको अगर चलती रहती आज हमारे यहाँ स्टील भी बनता। आप रिफाइनरी बंद करने की बात कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे क्रैकर होना चाहिए और रिफाइनरी जो है वो क्रैकिंग का काम करना चाहिए। हमारी रिफाइनरी आज भी वही चीज़ बना रही है। मैं यही कहता हूँ इसको जिद्दत लेके आए, उसको अच्छी चीज़ लाएँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन रिफाइनरीज को जो उसको फर्नेस को बना रही हैं और जो जिस तरह से वो आर्बिट्राज पे चल रही है, उस मॉडल को किल करें, उसमें इनोवेशन लाएं, उसमें पॉलिसी के अंदर ऐसी चीज़ें लाएं कि नए प्लेयर आए, उसमें इनोवेशन आए, उसमें स्पिल ओवर आए। अगर आप नहीं करेंगे तो यार आर्बिट्राज सबको अच्छा लगता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके छक्के लगाना सबको अच्छा लगता है, आर्बिट्राज में वेंडर इंडस्ट्री पे चढ़ना भी सबको अच्छा लगता है। जी अली, मैं आप बहुत एडमायर करता हूँ, बट आई हैव अ स्मॉल कमेंट। देखें, यू आर एन ओपिनियन लीडर, वॉट एवर यू से हैज़ कैरी सम वेट, so you have to be very careful in what you are saying and whether it is backed by facts and figures. Do you know textile में हमारी जो garments हैं उनके अंदर जो imported content है including cotton, buttons, zippers and electricity which is imported also is more than 50%. Now when you look at auto sector and when you say कि जी raw materials import होते हैं इसलिए auto sector की कोई utility नहीं है, मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। मैं आपसे इसलिए इख्तलाफ करूंगा, आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में स्टील मिल लगनी चाहिए। आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट को इनकरेज करके उन ग्रुप्स के पास जिनके पास 100 अरब रुपए के रिजर्व्स हैं, वो ग्रुप्स लेवरेज करके जेवीज करके स्टील मिल लगाएं। प्लास्टिक रेजन बनना चाहिए। यहाँ यू शुड बी टॉकिंग अबाउट बेसिक रॉ मटेरियल्स। देखें अली, बात ये है कि अगर आज आप बांग्लादेश के पास जाएं, हमारा मसला ही हमारे पास जो नेमत होती है हम उसको ठुकराते हैं और फिर उसके बाद रोते हैं। पॉइंट इज प्लीज अप्रिशिएट व्हाट वी हैव एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट। Thank you. While the last speech was going on, we were joined by Mr. Tariq Khan from House of Habib and Mr. Sunil Manch from Park Wheels as well. Moving forward, I would like to invite Dr. Adil Nakhuda, who is the assistant professor at IBA and founder of the Economic Advisory Committee. He's an assistant professor and research in a lot of departments. I'll let him continue. That's my introduction. I'm an assistant professor at IBA Karachi, part of the Economic Advisory Group, and that's my email address, my Twitter account. So we have more than 1.8 trillion worth of vehicles and parts and accessories were traded globally in 2021, out of which 860 billion was in parts and accessories. So this is a very large market. It contributes to about 10% of the global trade. So about $22 trillion का global trade है,
2021 में उससे से about 1.8 trillion dollars आपका ऑटो सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है. So it's a very large, important, significant industry in terms of trade. Largest exporters, Germany, Japan, China, USA, and Mexico, all reporting more than $100 billion worth of trade in this industry. Larger exporters की खास बात ये भी है कि वो फाइनल गुड्स भी सेल करते हैं और ऑटो पार्ट्स और इंटरमीडिएट गुड्स में भी काफ़ी करते हैं. जैसे आपका एग्जांपल चाइना और जर्मनी का है. वेरी लार्ज एक्सपोर्टर्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बहुत ही कम एक्सपोर्ट्स है. अबाउट $180 million की थी टोटल इंडस्ट्री की, या $160 million की टोटल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट इन 2021. So we are ranked in auto parts, we were ranked as 85th largest in the world. Population हमारा 6th largest या 5th largest आप बता सकते हैं, लेकिन हमारी exports about auto parts, auto industries की parts and accessories की 85th in terms with 200 countries. So this highlight of the presentation, trend in global trades, trend जो है global trade का, participation in global value chains through backward and forward linkages, थोड़ी import tariffs की बात करूँगा on parts and on final goods. Non-tariff measures, government regulations की बात है, हम लोग के पास कितने government regulations are, with the lack of it in Pakistan, and trade obstacles जो face करते हैं हमारे firms. This is the data, I won't spend too much time on this. So when we look at the data here, this is the international trade data. Germany, Japan, China, US, and Mexico are the largest 5 exporters. And generally what we see is that they export a lot of parts and accessories along with the exports in final vehicle, right, the final product. So when we look at exports and imports, so what I'm going to do is going to do this study specifically on the middle income exporters, which are China, Mexico, Thailand, Turkey, and India. Something more comparative to our income levels. And then I'm going to compare that with Pakistan. So if we see this, we see that China exports and imports parts and accessories. So that's the thing. This industry has two-way trade. So इसमें industry में अगर आप ये लार्ज का देखें तो जितना ही जनरली एक्सपोर्ट करते हैं इतना ही वो इंपोर्ट भी करते हैं पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की. ये सिनर्जीज जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिंकेजेस की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री में. यू कैन नॉट एक्सक्लूड वन टू डू द अदर, राइट. सो दैट इज व्हाट वी सी वर्ल्ड ओवर. द लार्ज एक्सपोर्टर्स इन्वेस्टेड, वो लोग ने दोनों इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, एक्सपोर्ट में भी हो रही है और इम्पोर्ट्स भी हो रही है बाकायदा. सो इसमें कंपेरेटिव एडवांटेज की जो बात आ जाती है जब ये हम ग्लोबल जो फ्लोज की बात करते हैं. सो वेयर डज चाइना एक्सपोर्ट? China has generally a global hub, has become a global hub. East Asia भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है और अदर रीजन्स में भी जा रहा है. मेक्सिको का देखें तो इट्स वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद द यूएस मार्केट. नॉर्थ अमेरिका की मार्केट में ज़्यादा कर रहा है मेक्सिको, और वो मेक्सिको से लेता भी ज़्यादा ही है वो नॉर्थ अमेरिकन जो उनकी है एक्सपोर्ट्स. थाईलैंड अगेन ईस्ट एशिया पे ज़्यादा उसका फोकस है जापान के साथ, और टर्की का यूरोप के साथ ज़्यादा इंटीग्रेशन है. सो व्हाट वी सी इज दैट एक्सेप्ट फ्रॉम चाइना, जो जनरली द अदर कंट्रीज दे हैव बिकम रीजनल हब्स बनाए हुए हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, बिकॉज हमारे जो रीजनल इश्यूज जो है, हमारी रीजनल इंटीग्रेशन नहीं है इतनी साउथ एशिया में, वो रीजनल हब का जो वो चांस है वो नहीं हुआ है, और उसकी ज़्यादा बात भी नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हमने जो लार्जेस्ट मार्केट है हमारे अराउंड इंडिया, उससे हमारी ट्रेड ज़्यादा होती नहीं है. तो उसके हमारे पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें ये इश्यूज आते हैं इसके. सो चाइना, मेक्सिको, थाईलैंड, टर्की आर द लार्जेस्ट मिडिल इनकम एक्सपोर्टर्स in the auto industry. उनकी $100 billion से ज़्यादा exports है parts and accessories की, उसमें 10 billion, sorry. So significant two-way trade, right? So what basically drives this is two-way trade. Exports and imports. Both are important in this case, in this industry, because that's how you develop your competitive edge, right? You want to compete, you have to basically export, but you're also going to have imports of parts that you can't produce. So China exports mostly to East Asia and European markets, Mexico to North American markets, Thailand to East Asia, and Turkey to the European markets. India के हम देखते हैं तो generally other regions की ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे सब अफ्रीका में देख रहे हैं, इंडिया की मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में ज़्यादा देख रहे हैं that. So फिर ये क्वेश्चन आ जाता है global value chains, right? What basically auto industry is about is कि एक गुड जो है, आपकी एक गाड़ी है, वो multiple times border cross कर रही होती है, एक international border को मल्टीपल टाइम्स कर रही होती है. जब टैरिफ्स लगाते हैं तो दिस डिस्करेजेस दैट ट्रेड. स्पेशली पार्ट्स एंड एक्सेसरीज पे हम टैरिफ्स लगाते हैं विच आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स मल्टीपल टाइम्स, राइट. सो देन यू आर गोइंग टू हैव दिस प्रॉब्लम. इफ अगर आप टैरिफ्स फेस करेंगे तो आपके रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपको ये मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करने की बॉर्डर्स की.
So GVCs की ये दो तरफ से होती हैं, एक forward linkages होती हैं, right? Domestic production used in import as exports, and then you have backward linkages. Backward linkages are where foreign production consumed by the importer. So what you are basically looking at is how do we produce the good and sell to the world? तो हम लोग अगर forward linkages की बात करें तो हमारा good आगे जाके चाइना जा रहा है या कहीं जा रहा है, फिर उसकी एक्सपोर्ट्स में बन रहा है. और बैकवर्ड लिंकेजेस, चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो हम लोग किस तरह उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे इंपोर्ट्स को इनटू एक्सपोर्टेबल आउटपुट, राइट? तो ये लिंकेजेस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जीवीसीज और ऑटो इंडस्ट्री में बड़ी स्ट्रॉन्ग है इन दैट सेंस. So GVCs, they propel trade in the auto sector. The share of backward linkages are high in the auto sector, as many products require imported inputs in this sense. Pakistan also reports high backward linkages in this sector. Generally, हमारे जो trade है वो forward linkages के साथ है. हम लोग जनरली अगर आप टेक्सटाइल की बात ले लें तो उसमें हम फॉरवर्ड लिंकेजेस ज़्यादा देखते हैं, लेकिन दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उसमें बैकवर्ड लिंकेजेस ज़्यादा कॉमन होती हैं वर्ल्ड ओवर. सो अगर आप वर्ल्ड ओवर देख लें तो चाइना, ये जो रेड पार्ट है ये बैकवर्ड लिंकेजेस का है, राइट? सो इवन इफ यू सी चाइना, इंडिया, विच हैव डेवलप्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस विच आर यूजिंग देयर ओन प्रोड्यूस, ओन इनपुट्स टू एक्सपोर्ट एंड क्रिएट एक्सपोर्ट्स फॉर अदर कंट्रीज, वो भी अगर आप देखें तो बैकवर्ड लिंकेजेस का काफ़ी शेयर है. एंड व्हाट वी आर सीइंग इज दैट एक्सपोर्ट्स में imports की जो imported inputs है उसका रोल बढ़ाया जा रहा है, right? In that sense, if you look at all these countries, except for Pakistan, which has remained stagnant, all other countries, they have increased their GVC participation. ये जो ग्राफ है ये basically कह रहा है कि countries की जो global value chains में जो contribution है वो increase होए जा रही है. Unfortunately, पाकिस्तान की बड़ी minimal है, $80 million हमारी GVC की basically है. हमारे जो goods बनते हैं वो दूसरे countries कैसे use करती हैं उनकी exports बढ़ाने में, या हम कैसे हमारे imports को exportable बनाते हैं. So in that linkage, we are not doing well. We have basically remained very consistent in that. And then if you look at the percentage share, you see that the red part is very important in a lot of countries. And this red part is telling you how imports can drive your exports. You can't exclude your imports to drive your exports. So competitiveness edge जो है आपको world market आपको देगा, तो दूसरी आप source करके भी कर सकते हैं in that sense. So GVC participation आपका जो है वो significant world over has increased significantly in the last 15 years, but in Pakistan we see this very stagnant at $80 million. So आप दूसरे countries का देखें 20 billion से exceed कर रहा है. So China and Mexico का $50 billion से exceed कर रहा है इनकी GVC participation, where they're creating goods that cross borders multiple times. मेक्सिको का ये बड़ी खास बात है कि वो जो गुड है वो वापस यूएसए से वापस आता है, यूएसए में कुछ बनती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वापस मेक्सिको आता है, फिर वापस बन के जाता है, या कनाडा से आता है मेक्सिको जाता है, मेक्सिको से यूएसए जाता है, राइट? सो दैट लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड चाइना इज नाउ, चाइना का ये देखा जाए कि फॉरवर्ड लिंकेजेस में काफ़ी उसका रोल बढ़ रहा है, वेयर इट्स पार्ट्स एंड एक्सेसरीज आर बिकमिंग इनटू एक्सपोर्टेबल गुड्स इन द कंट्रीज दैट इट्स एक्सपोर्टिंग टू. So Turkey भी है जो आपका 10% इसमें आ रहा है. Pakistan is heavily reliant on imported inputs. Export mainly added value to imports create strong linkages, right? So that's what we need to look at, is the strong linkages between this. So what happens here right now are import tariffs. So import tariffs, again, contentious. We have already had this discussion. Import tariffs का क्या है? High tariffs discourage international trading activities. Experts advocate low tariff rates, especially in industries that are reliant on GVCs, right? Pakistan reports one of the highest tariff rates on the imports of products in the auto industry. Tariff rates coupled with import restrictions lead to higher prices in the domestic market, which we are seeing right now, shortage of supplies. Other countries, they report much lower tariff rates. और GVCs को अगर enhance करना है, increase करना है, you need to lower your tariff rates. So if you look at the parts and accessories की tariff rates, we see that Pakistan has the highest compared to all the other countries in the region. When we look at the tariffs that are faced on our exports, right, so that are pretty low in that sense, less than 5%. So our destinations are giving us concessions. We are putting a lot of restrictions on our goods on imports through tariffs. And as you see, that's the difference here. So, okay, Pakistan applied a tariff rate of 71% on import of cars and 18% on accessories. Other countries, they're almost non-existent. A lot of countries like Mexico, Turkey, they have reduced their tariff rates, and China below 5%. And we see this. So फिर दूसरी बात आ जाती है जो non-tariff measures की है. तो एक tariffs है, दूसरे non-tariff measures है. Government regulations are based on quality of goods that we have. So product standards, certifications, testing. फिर non-tariff जो technical जो है और non-technical है. Non-technical are the quotas,
import restrictions and all that we have. Technical NTMs, your technical product standards, certifications, testing, they are becoming very prevalent in the world, and tariffs are replacing them. Non-tariff measures are they're replacing the tariff measures. And then what we see is convergence. A lot of countries are adopting similar standards. So उससे आपकी trading जो आपका अगर पाकिस्तान में एक production standard है वो दूसरी countries भी adopt कर रहे हैं in that sense. So when we look at our frequency of technical non-tariff measures, we see that they're almost non-existent in Pakistan, especially in parts and accessories. We don't have really government-based, government-mandated regulations here on certifications, etc. जितनी भी आपकी certifications वगैरह हो रही है वो OEMs कर रहे हैं, right? उनकी requirements के through. So classification जो आप technical NTMs का देख रहे हैं by production stage, what we see is that we are just on conformity assessment while the other countries have diversifying the range of standards and parts and accessories and the testing done through government regulations through NTMs. And similarity, now China becoming a very large trading market, we need to make sure that हमारे standards China के साथ कैसे match हो रहे हैं, or how are other countries matching China's, or how is China matching its standards with other countries that it trades with. तो China का देखते हैं about 60% parts and accessories के साथ यूरोप के साथ मैच कर रहा है. सो अगर चाइना भी टेस्टिंग कराता है, कंफर्मिटी असेसमेंट कराता है, सर्टिफिकेशंस कराता है, यूरोप भी कौन सी करा रहा है. एंड विद दैट, इफ दैट इज मैचिंग, then that is likely to reduce the regulatory burden of the producers in China as well as in Europe when they trade, because they're already doing that before exporting. लोकल मार्केट के लिए भी अगर सप्लाई करना है तो आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस कैसी है, अगर वो मैच होती है आपकी एक्सपोर्ट मार्केट से तो आपको वो बर्डन कम हो जाता है जो आपको वैसे एक्सपोर्ट के लिए कराना होता है, राइट, स्पेसिफिकली. So what we see is that Pakistan ki technical and non-tariff measures are very low, like at about 40%, 75%, they're generally what we see in the other countries. So China applies a lot, right? China, agar aapko export karna hai, to you'll have a range of technical measures that you have to do, certifications, etc. And it's our inability to meet these regulations that causes a lot of problems to our exporters. But NTM regulations on product quality are almost non-existent. Firms, यहाँ पे हम देखते हैं तो जो भी standards, what we look at, OEMs are setting them. They are not set in by government-mandated regulations नहीं होती, generally. So lack of NTMs applied by Pakistan increases regulatory distance. ये regulatory distance जो है ये cost बढ़ाता है trade का, right? So they're detrimental to exporters and all that. तो पे firm obstacles आ जाते हैं. Let's talk about firm level obstacles, some of them that are reported in the studies. And what we see, unfortunately, in Pakistan is that we have one of the highest obstacles reported by firms. So firms, when they were interviewed, surveyed by World Bank last year, they reported that customs and transit-related or transport-related obstacles are one of the most severe in the region in Pakistan. And they create a lot of inefficiencies. ये आप देखें तो हमारे जो major और severe obstacles हैं वो सबसे highest हैं compared to the countries that report the same when they are asked about the obstacles, which for some countries like Thailand are almost non-existent, right? So transport or customs, they tend to be very much, so Pakistan का जो green bar है वो काफी high है compared to the other countries, right? So specific trade, अब ये आ जाता है question, which countries are important sources for final vehicles and parts and accessories? What products are exported from the major middle income exporters, and how is Pakistan different from its counterparts? So when we look at this here, we see that percentage share by major source countries in total imports, right? So we look at this and we see that it's all a lot of regional trade, except for China. A lot of other countries have become very regional focused. जैसे आप थाईलैंड देखें तो जापान के साथ ज़्यादा integrated है, मेक्सिको यूएसए के साथ ज़्यादा integrated है, पाकिस्तान भी आप देखें तो हम लोग का जो final vehicle है जापान, थाईलैंड और चाइना से आ रहे हैं mostly. While the parts and accessories, so our parts and accessories go a lot to UK, UAE, Middle Eastern markets में ज़्यादा जा रहे होते हैं in that sense. Then when we look at our percentage share of parts and accessories in exports, we see that we don't export engine parts, right? We don't really export engine. हमारी सिर्फ electric accumulators and conductors, gearboxes and drive axles and suspensions की भी हमारी बड़ी कम है compared to the other countries, which have a larger chunk in that. So the parts and accessories that they export are generally linked to that. So that's one thing. Then specific trades की ये बात आ गई. This is just a review of that. चलिए सही है. Engines again have a negligible share in exports. We are basically other countries are exporting a lot of gearboxes, brakes, and engines. China tends to be, जी बस ये last है. Empowering, so मेरे जो थोड़े recommendations है, we need to focus on SMEs. SMEs को empower करना है. SMEs की बात हो रही है. SMEs की empowerment is highly important in this.
So we need to develop clusters and agglomeration की बात है. We need to create this innovation के लिए जो cycle है. Innovation के लिए जो आपका जो incentive है वो आप लोग ही है, the knowledge that you have, right? That needs to be tapped into. Trade procedures को easy करना है. Documentation जो आपके procedures है, processes है, उनको easy करना है. That's important. Technical capacities to SMEs is very important. Your SMEs need to be adequately trained. They need to have adequately trained labor force, and access to certification and licensing facilities need to be improved, because that's where the cost is. The burden, the regulatory burden of exporting is there with those. Information gathering ki bari important baat hai. A lot of things. So one of the things that I do is I also offer training to a lot of SMEs. Man, I think Mashood Saab baithe hue yahan pe, I've done some training with him. So isme ye gathering or trade processes and processes ki bari important baat hai. We need to take advantage of the Pakistan single window which was launched last year. Isse aap apni knowledge apni try kar integrate karna. Identify potential markets through online databases. Sunil baithe hue yahan can guide about this, or Parkwees, how they can be used. Those databases can be used to connect to buyers and sellers, right? Connect between buyers and sellers. ITC ka to trade map hai, online marketplaces, they are very important in that. Up-to-date information is highly critical. As if you're an exporter, you have to have up-to-date information on your own products and on the markets everywhere, right? So this is highly important in that sense. Government regulations, you need to know about the government regulations that are changing every time. So that is very important. Thank you. For our next speaker, I would like to call upon stage Mr. Tariq Ahmed Khan. He's a senior director at House of Habib, and he is one of the most technical person in the auto sector right now. He has envisioned a lot of localization for the industry and is also author of books like Japanese Management and Kaizen, A Way of Life. Please welcome him. Assalamu alaikum and very good afternoon. सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि आई एम लिटिल लेट, बट उससे मुझे एक एडवांटेज ये लग रहा है कि पैनलिस्ट में अगर मैं शुरू से बैठा होता तो शायद गर्दन घुमा के यूँ देखते देखते रज़गार के साहब की तरह मेरी गर्दन में भी दर्द हो चुका होता और मैं शायद वहाँ पे जाके बैठ चुका होता. एनी हाउ, द गुड थिंग इज़ दैट आफ्टर आमिर, दानियाल, खिजर एंड सो मैनी पीपल, माडवीवाला साहब, आई एम नॉट सॉट अ गुड स्पीकर, और स्पेशली लास्ट प्रेजेंटेशन के बाद जब किसी ने सवाल नहीं पूछा तो इसका मतलब ये है कि द पीपल वांट एंड, सो आई वांट टू फिनिश इन अ वेरी क्विक वे. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग हियर 150-200 पीपल इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं. अच्छा, ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं माशाल्लाह, ये वो हैं जो इंडस्ट्री की पूरी जान है. तो आई हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉट फ्रॉम इंडस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई विल रिटायर फ्रॉम इंडस ऑन 9th of November, and then maybe I will join as a diversification and new project in House of Habib. So मैं जो आपके साथ हूँ इस टाइम पे आपके प्लेटफॉर्म से रख के आपको कुछ सजेशन देने के लिए आया हूँ. So what I am trying to do is that what you can do, where is your world and where are you. So before starting, can you change the slide please? So I think before start of my presentation, so आपने शायद ये बड़ा मशहूर फ्रॉग का सुना होगा कि अगर आप उसको किसी फ्रॉग को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दें तो उसके पास एक चांस होता है, जो वो क्या होता है, फौरी तौर के ऊपर अपने आप को बचा लेता है. अच्छा, लेकिन अगर आप उसी में क्या करें, फ्रॉग जो है वो पानी में आहिस्ता आहिस्ता टिमिड वाटर आप स्लो करके गर्म करते रहें, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप लोग जो है उससे बाहर नहीं निकल सकते. अनफॉर्चुनेटली वेंडर्स जो हैं यहाँ पे 20-20, 30-30 साल से, उनकी कंडीशन अब उस फ्रॉग की तरह हो गई है कि जो अपने आप को अभी निकाल नहीं सकते, अगर निकालेंगे तो डेड हो जाएंगे या बिल्कुल ही उसी के अंदर रह जाएंगे. नाउ हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ द थीम. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, इसमें देखें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जब लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, सो दे वर फेल्ड. नोकिया इज वन ऑफ द थिंग दैट नोकिया ने जो है ना अपने आप को चेंज नहीं किया, उन्होंने वही पुअर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए, अवर रिलायंस ऑन आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, तो वो फेल हो गए, हालांकि दे वर द वेरी वन ऑफ द पायनियर. नेक्स्ट. देन इस पर मैं एक बड़ा मशहूर ये कार्टून दिखाता हूँ जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, दबाओ, कि एक आदमी जो है वो एक तलवार हाथ में लिया हुआ है, विच में भी आमिर, और कह रहा है कि नो सॉरी नॉट आमिर, आमिर इज ऑन द अदर हैंड विच इज जस्ट टेकिंग अ हैंड, कि वो ये कह रहा है कि यार मुझे दुश्मनों से लड़ने जाना है, वो तलवार लेके जा रहा है, और ये आदमी तो मशीन गन लेके खड़ा हुआ है कह रहा है कि प्लीज़ यूज़ LMG. वो कहता है नहीं मेरे पास, आई डोंट हैव एनी टाइम टू गो एंड जस्ट फाइट.
सो अब हमारी इंडस्ट्री में ये हो रहा है, हम सब बातें बहुत कर रहे हैं इस टाइम पे और क्रिटिक बहुत कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अच्छी एग्जाम्पल नहीं उठा रहे और आगे का विजन और उस पर ज्वाइंट काम नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टू टाइम जो अभी डिस्कशन हुई उस पर भी कमेंट करता चला जाऊँगा। देखें, खराब कंडीशन सबको पता है, आई विल नॉट टेक द टाइम। सबको पता है कि इस टाइम पे डॉलर की किस तरह डीवैल्यूएशन हुई, अब थोड़ा सा हो रहा है लेकिन वो भी पता नहीं, कल ब्लूमबर्ग ने अगेन वहाँ पे वो किया है। सो बहुत ही अनक्लियर वॉल्यूम फोरकास्ट है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन है। अच्छा, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्पाइट चेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक OEM आर pressuring supplier to keep costs down and showing to a lack of willingness to step out of established supplier relationship pattern. Then shift in technology है। अच्छा, ये सारे challenges हैं जिसकी वजह से अब आप एक frog condition में आ गए हैं। अब क्या करें? What we need to do? Next please. देखिए, कुछ challenges हैं जो automotive में हैं। पहला challenge ये है कि automatic जो आपके पास normal इंजन है वो फेज आउट होना है, पाकिस्तान में 2023 में होना है, 2032 में होना है। बट ये एक फैक्ट है, वर्ल्ड का पूरा एक ग्राफ है कि आपका जो ICE इंजन है वो आपका बहुत जल्दी जो है रैपिडली डाउन होगा बाय 2030 एंड इलेक्ट्रिक कार ले लेगा। अच्छा, जहाँ ये एक तरफ इंजन पार्ट मैन्युफैक्चर के लिए बैड न्यूज़ है कि व्हाट दे विल डू, ऑन दी अदर हैंड जो जेनरिक पार्ट वाले हैं जो कि पूरी बॉडी तो वही रहेगी, विंडशील्ड वही रहेगी, उसके अंदर डोर वेदर स्ट्रिप वही रहेगी, शीट पेटल वही रहेगा, इट्स ओनली चेंजिंग ऑफ द इंजन। तो ये उनके लिए तो सेम सही है मतलब, लेकिन दूसरे लोगों को अभी से सोचना पड़ेगा, फ्यूल टैंक वाले को, दूसरे पार्ट के, भाई हम क्या करेंगे उस टाइम पे। वाई नॉट दे थिंक कि यार हम इलेक्ट्रिक बैटरी के ऊपर काम करें, वाई नॉट द बैटरी कन्वर्टर के ऊपर हम काम करें। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, सेकंड जो है ना, न्यू जितनी टाइप की व्हीकल्स आ रही हैं इसके अंदर ऑल्टरनेट मटेरियल आ रहा है। पहले हमारी गाड़ी के अंदर, अब मुझे याद है 2002 के अंदर शायद हार्डली 20 पार्ट्स ऐसे होते थे जो कि हाई टेंसाइल होते थे, 440 प्लस अबव। नाउ दे हैव इंक्रीज अप टू 150। अब जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है, मैंने निसान की एग्जांपल उठाई है, वो तो टोटली उसके अंदर जो है ना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसमें होने जा रही है। अच्छा, इसमें से जिन लोगों ने चेंज नहीं किया, I know couple of the people, जब डोर ट्रिम चेंज हुआ फ्रॉम बोर्ड टाइप टू इंजेक्शन मोल्डिंग, दे हैव नॉट चेंज, सो दे हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर मार्केट शेयर। सिमिलरली फ्यूल टैंक अब लोहे से सारा रेजिन पे हो रहा है। ये सब डिफरेंट चेंजेस हो रही हैं। व्हाट आई विल ट्राई टू से कि एक तरफ थ्रेट है मगर दूसरी तरफ जो है आपके पास, उसको आप अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। यू थिंक कि जो हाफ ऑफ द ग्लास वाटर खाली है या हाफ भरा हुआ है, वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्लीज। इसका मतलब ये होगा कि पहले एक मॉडल जो कि 40,000, 50,000, 30,000 साल का बिक जाता था, तो उसकी लोकलाइजेशन के लिए टूलिंग कॉस्ट आप मतलब कंपनी अफोर्ड कर लेती थी। अब जब वो 10,000 के वॉल्यूम पे जा रहे हैं और उसी पार्ट की टूलिंग, क्योंकि बिकॉज हमारे पास पाकिस्तान में टूलिंग कैपेबिलिटी नहीं है, अब इसके लिए हम क्या करें? हाउ डू वी इंक्रीज द लोकलाइजेशन? कैन वी मेक अ सम, मतलब ये कि हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। कैन द गवर्नमेंट वर्क विद, आप लोग इतनी मतलब पैप शो वगैरह करते हैं वेंडर्स, और जाहिर बात है OEM को भी साथ देना चाहिए। कैन दे डेवलप अ 2 or 3 वर्ल्ड क्लास टूलिंग सेंटर, नॉट वर्ल्ड क्लास, चाइना ने जिस तरह किया है उनके कोलैबोरेशन से, KTDMC है, क्या हम उसको और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं कि वो हमारे पूरे मुल्क की सूरत हाल पे कर ले? दैट्स अ क्वेश्चन। देन डाइवर्सिफिकेशन। मेरी एक सजेशन है, आप लोग कहते हैं ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर, वाई यू वॉन्ट टू एक्चुअली make your constraint in your mind that you are only related to auto part? Why you cannot change कि जी मैं तो इंजीनियरिंग गुड मैन्युफैक्चरर हूँ? Why cannot? Because देखें, जिसने ऑटो पार्ट्स के पार्ट डेवलप कर लिए उसने सारे हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड कर लिए। और मुझे जो इन्होंने रहमान ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने टेक्सटाइल पे सही एग्जांपल दी। मैं इन सारी इंडस्ट्रीज़ को जानता हूँ, मैं वाइट गुड के बारे में कहना नहीं चाहता, नहीं तो मेरे वो हो जाएंगे, बट इसके अंदर अगर आप देखें कार के मुकाबले में खिजर, दिस इज़ 20% लोकलाइजेशन भी नहीं है, एंड दिस इज़ अ हाईली कंज्यूमर मार्केट, वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग। अगर हम गाड़ी का बम्पर बना सकते हैं तो वाई कैन नॉट वी मेक द एक्चुअली बॉडी ऑफ द स्प्लिट यूनिट? वाई कैन नॉट वी मेक द कंडेंसर एवोपरेटर? तो वाई कैन नॉट यार, मतलब ये कि जब पार्ट मैन्युफैक्चरर बना सकता है उससे बेहतर compete में, इसी तरह दूसरी फील्ड में भी जा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग अपने पैसे, दिमाग के ऊपर पैसे सबसे पहले जो है ना वो हटाएं कि जी वी आर ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर।
आप बोलें जी वी आर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर। देखिए मैं आई नो कपल ऑफ द एग्जांपल्स आई कैन टेल यू। ये जो मैंने सॉरी वापस आना, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं एक सप्लायर है लाहौर का, हु वाज इनिशियली 93% रिलायंस ऑन ऑटो। नाउ टुडे यू नो हाउ मच ही हैज अ रिलायंस ऑन ऑटो? 10%, 90% he is making shampoo bottles and all others and etc. In Karachi, even I know the vendor, I don't want to take the name, he was making for Shell many of the bottles. He is now surviving from them. इसमें बहुत जान है, मतलब आपको इसकी तरफ देखना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा आफ्टर मार्केट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है। इन्होंने बहुत सारा डेटा प्रेजेंट किया है प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने। मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से निकालने की कैलकुलेट की, क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट डेटा ना किसी स्टॉक मतलब मिलता नहीं है आपको। स्टेट बैंक से आप जो लीगल इंपोर्ट है वो ले लेंगे, आपके पास स्मगलिंग का, अफगान ट्रेड का, पाकिस्तान में कितने वेंडर ऐसे हैं डायरेक्टली दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ अदर देन ऑयल कंजम्पशन ये 50 बिलियन PKR से बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर 80-90% वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। अब शीट मेटल का एक लाहौर का पार्ट मैन्युफैक्चरर है, ही वाज इन अ मच ट्रबल। उसने सिर्फ कुछ गाड़ियों के फेंडर बनाना शुरू करे आफ्टर मार्केट के। आप यकीन करेंगे ही सर्वाइव नॉट ओनली बट के वो सक्सेसफुल भी हो गया। सो वाई कैन नॉट वी थिंक फॉर आफ्टर मार्केट पार्ट विच वी आर इम्पोर्टिंग। अच्छा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे बहुत बात हुई। देखिए एक्सपोर्ट पे जिन्होंने जैसे 2005-06 में रज़गार साहब भी माशाल्लाह जब से उस फील्ड में हैं और बहुत पैशनेट हैं, इसी तरह बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस पे काम किया एक्सपोर्ट के ऊपर, और वो बहुत कामयाब रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि एक सऊदी ये कहता है कि अगर मेरी गाड़ी लग जाए और मेरे पास एक डॉक्टर को दिखाने का वो हो और एक गाड़ी का स्पेयर पार्ट चेंज कराने का हो, तो मैं सबसे पहले स्पेयर पार्ट चेंज कराने जाऊंगा। सऊदी अरब के अंदर क्या हो रहा है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन हमारी सारे नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। Why not you think to add your facility in Saudi Arab? Why not you think to go somewhere else in other country where you can, where the government will support, because that will add your value. क्योंकि यहाँ तो आपका बेस है ही, you have a knowledge. सऊदी अरब में जो इनका 2030 का प्लान है उसमें वर्ल्ड क्लास ये लोग कमिट कर चुके हैं। ये वो है सऊदी अरब में 8 और 9 नवंबर को एक इवेंट हो रहा है। Whosoever would like to go, you can get a certain benefit to get the advantage of that. नेक्स्ट पे प्लीज। अच्छा एक्सपोर्ट पे मैं सिर्फ एक मशहूद के बात का जवाब दूंगा जो इन्होंने कहा। यस देखिए एक्सपोर्ट, दो लोगों ने मिलके एक ड्रीम देखा 2006 में, और उन्होंने 5 आदमियों से कंपनी बनाई और $2 लाख की उन्होंने एक्सपोर्ट की। और उन्होंने एक्सपोर्ट क्या की, दे हैव डन द रीराउटिंग, दे हैव टेकन फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। आज 2022 में 666 मिलियन $US की एक्सपोर्ट कर चुके हैं। 2000 लोग हैं, उस कंपनी का नाम है यूटोपिया। 2030 का जो उनका विजन है वो है, और उसमें कर क्या रहे हैं वो आपको पता है? सिंपल प्रोडक्ट। इफ़ यू अगर उनकी आप प्रोडक्ट देखें तो बोले यार ये तो मैं 3 दिन में बना सकता हूँ, बट इट्स अ जुस्तजू, और आप जुस्तजू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई एग्री विद यू कि गवर्नमेंट का विजन होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, OEM की सपोर्ट होनी चाहिए, but what we are doing for ourselves is something. My last is that if you can dream it, you can do it. Or those people who don't have a dream, they cannot be, I mean, that life person. So this is my very small and sincere presentation to you. So if you have any question, I'm okay. I would like to invite our next speaker, which is Mr. Murtaza Mandviwala, who has more than 2 decades of experience in dealerships and is managing the business also. He was also elected as the president and chairman of Pakistan-Japan Business Forum, and he's also an author of the book Steering the Pakistani Wheel. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman PAPAM, convener and organizing committee of PAPS, respected keynote speakers. आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? Respected delegates of the symposium, especially the foreign delegates. The eminent speakers have spoken to us about successes, a story about right-hand drive as a market, discussion about the mindset. So what are the key messages to the reader?
The book highlights the enormous impact of the intertwined automotive canvas. It's not just the industry, has on the Pakistani society and people's livelihood. Therefore, this is the time to synergize. And yet, the state has not provided the people with efficient alternatives of transportation, such as mass transit, rail, river, and air transport. There are no substantive plans that will alter this scenario. Hence, road transport and motorization will remain the key element in the mobility of Pakistanis. Therefore, in the medium and long term, the automotive industry will surely grow. The book discusses at length the ad hocism of the regulators and the inability of successive governments to fully recognize the importance of road transport, other than road building, as a key driver of economic growth, and continue to heavily tax the entire automotive landscape. Once again, the entire automotive landscape. Surely this trickle effect has been that the high cost of road transport to the people of Pakistan. The book documents that many successes of the landscape presents a bright future and suggests that the timing is right to view the landscape in its totality and not in silos. Therefore, synergize. I've already stated the road transport is the way forward. You can gauge from the data that 90% of our freight and people travel is through road transport. It is significant that 63% of our population is rural and dependent on road mobility. Most of you are already aware of key indicators, but I've given some indicators for the benefit of those who are not in the industry itself. For the benefit of overseas guests, and there are some student sites here, the industry is one of the highest sectorial contributions in GDP, taxation, and employment. Some highlights, once again, for students and some overseas visitors that I can see. The important point here is that the Pakistan automotive industry is no more in its nascent stage, no more, but in fact at the crossroads of moving from its development stage towards precision engineering solutions. Until, of course, the current economic downturn, which we are all facing. Next. The industry is dominated by Japanese brands and products, more so because of investments, not just in assembly operations, but also in training, joint ventures, technical cooperation, etc. Of course, with new entrants, the Japanese share has been impacted in some segments. This is the reality. So what are our strengths? The industry now has a nursery of developed skill sets. And the automotive industry has one of the highest operational efficiencies in the corporate sector, according to a State Bank study. Our motorization growth has been 10% per annum if you look at the last 13 years. Our localization has been 65% in four-wheelers and 90% in two-wheelers and tractors. Competition has arrived from Korea, China, and Europe. And there are clear signals of improvement in overall quality of products. Auto financing had peaked recently to 60% of all consumer financing. And new derivatives in auto financing are now being offered. Many of the consumers and regulators are often concerned about the rising cost of motor vehicles. But it is important to highlight that Pakistan automotive market has one of the highest resale values of motor vehicles. People don't, discuss and consider that. And of course, our road network is improving steadily, particularly the intercity network. So hence, we do have a developed auto landscape. The opportunities.
Medium and long-term demand will grow. I have already highlighted the primary reason being road transport. We don't really have a choice, as the only road transport is the only solution to mobility. There are also other signals. Only 3.3% of the population own four-wheelers and 13.75 own two-wheelers. There is the opportunity. Only 6% of the household own motor vehicles. And then, of course, and most people don't, as business people, we see not just the data, but we sense the pulse and the things. And we all will agree that there is a growing middle class in absolute numbers. In challenges. In August this year, I attended a seminar in Tokyo as chairman of the Pakistan-Japan Business Forum. This seminar was organized by JETRO, and one of the presentations highlighted two important positives given the economic crisis we face. And both these presentations were by Japanese. The presentation stated that we have seen the highs and lows of Pakistan. That we have seen the highs and lows of Pakistan. And that this is the time to invest as the cost of entry is low. Gentlemen, Pakistan is a resilient nation, and past economic downturns show that our country bounces back sooner than forecasted. This was also mentioned by some other speaker before. Our industry is fairly resistant to volatility in demand and inflationary sense. हमने देखा है सब जी, आप लोगों ने देखा है. And the challenges highlighted are also well known to our stakeholders. Next. So the book proposes and provides some specific suggestions. The recommendations in the suggestions in the book are essentially a compilation of what the experts are saying all along. Right? I don't consider myself an expert. Right? I have compiled everything what you guys have been saying, and are summarized in three-pronged strategies: achieving volume, which has been part of the discussion, ensuring value for money, and building global competitiveness. The book examines environmental issues, safety issues, testing, training, and not just technical training, but the need for training in the entire landscape. One example is driver training. People just don't know how to drive. The book also provides specific structural remedies. The book discusses tariff and non-tariff challenges, taxation and financing of the industry and the consumer, and the dire need to address legislation. So moving forward, the book proposes to see the landscape in its totality. Thailand automotive industry has a super body, and only this month is organizing a conference on mobility. I believe there is a need for us to begin to alleviate the automotive landscape, because in achieving volume, ensuring value, and building competitiveness, both at home and in international markets, requires more than just a myopic lobbying of associations. We now need to develop an apex body which coordinates with many different stakeholders. The financiers, the insurance, the legislatures, the sellers, and the users need to study our requirements of mobility and formulate a plan or strategize with the regulators in a more cohesive manner. There are currently multiple policy documents made by different ministries, and I counted 13. Our laws are archaic. Some real examples are our seatbelt, the co-driver law is not there. Driver training, licensing rules, all need review. I write, the automotive landscape as a whole should be the locus of examination. Why does
the financial sector not be in sync with the rest of the stakeholders? When there are globally regarded as drivers of automotive growth, as elucidated earlier, up to 60% of all consumer financing is automotive. Auto insurance constitutes up to 40% of all general insurance. Why don't we look for synergies together in uplifting this landscape? Whilst there is a dire need for successive governments to know and understand and appreciate the depth of our automotive engineering strengths, and a lot has been discussed today on that, there is also a dire need for the industry to shun this comfort zone, and this word has been used before as well, this comfort zone of concessions and exemptions, and look beyond the realms of government support. Yes, ladies and gentlemen, the timing is right to not only synergize, but leverage our engineering strengths and venture forward. Gentlemen, Pakistan is still regarded as one of the frontier markets of the world of motor vehicles, and that is validated from the fact that many of the automakers have come to Pakistan. Just last slide. My request and offer to you. First is a request. Earlier, I stated that given the size of this industry, there is a dire need for more studies and research. Please support this book and send it to your overseas partners. They read. PAAPAM, if you have a research wing or a committee, please select a topic. And if you don't have a research wing, please make one. The offer is to the industry, the academia, and the stalwarts. Join hands in steering the Pakistani wheel by giving a meaningful topic. The study can be at student or faculty levels. The study will be fully or partially funded by the proceeds of this book. I will fund it. Right? And in the end, I'd like to end with two quotes. Peter Drucker, the father of modern management, says, the only thing we know about the future is that it will be different. And Henry Ford, the father of motor vehicle industry, says, if everyone is moving forward together, then success will take care of itself. And ladies and gentlemen, let us challenge ourselves. I actually challenged myself and wrote a book. I thank you for listening to me. I would like to invite Mr. Asim Ayaz, who is the Manager of Policies at Engineering Development Board, and often between the crosshairs of the vendors and OEMs both due to the policies. So he will be sharing his presentation. Honorable Chairman PAAPAM, distinguished panelists, worthy members of PAAPAM family, speakers, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, and first of all, on behalf of Ministry of Industries and Production, I thank PAAPAM for inviting us, and I congratulate them for putting up such an excellent show. So thank you very much for inviting, and I'll be speaking here on behalf of Government of Pakistan. And I'll come to the first remark first by Imtiaz Saab, that we have removed exports from our logo. It's not me who has removed, but this is unpleasant thing which has happened. But sir, let me tell you, the organizational structure which you formulated in 2006, having policy department, sector development, business development, nobody has dared to change that. We are still working on that, and we are trying to accommodate or facilitate the companies. Now, my role here over the last 3 or 4 years, I'm in charge policy, general manager policy. I can ask every family member what we have done in our part. I have reduced their visits to my office or to EDB. We operate on WhatsApp, we operate on telephone, we talk in the evenings, and PAAPAM will vouch for me that not only in the policy making we take their inputs, but I think for the last 3 or 4 years, they'll tell you that by your training, because you were in the panel who interviewed me when I got the job in EDB,
I have tried to learn from you, and we have facilitated them all, and they'll tell you. Okay, thank you for training me. And now coming to another comment from the worthy panelist, whether we should have auto industry or not, I think then we'll not have the capability, we'll not have the capacity, we'll not manufacture the things which you told us in your presentation. So we don't want to lose capability or capacity. Now, policies can be improved, although I'll say that we are not learned people. It's always prepared by the private sector. Amir Saab knows I am the secretary of that mobile policy which brought in 33 players. I'm the secretary of auto industry development policy. We have had 33 players in EV also. But we are not saying that we are not ready to improve. We'll improve by your inputs, and I'll answer during the presentation. I'll keep it short because I have highlighted some questions. I'll be ready to answer them. Next. So what was our policy? Policies are prepared by analysis of what is happening. We had only 3 players. We wanted to have some competition in the market. So the policy, automotive development policy 2016 and 21, what was the result? Greenfield and brownfield investments. 5 years tariff plan was given. Imports, standard, and these are the things which are listed, and we reorganized the auto industry development committee also. Next. So what are the achievements? We gave greenfield status to 21 companies. European, Chinese, Japanese, and Malaysian makes have invested in Pakistan. Total investment was over 1 billion. And my younger brother, Daniel, was telling, he is one of them. And he has exported a week or so back to Kenya. And we are looking forward that they export further. So the choice and the customers are now getting the compliant vehicles by virtue of policies. And this policy was made by active participation of PAMA and PAPAM. This was not, nobody in government is learned enough to have the policies implement, even prepared. So we get the knowledge from you people. We are always open, and we'll be looking forward once again also to improve what is our current policy even. Next. So this is the landscape. Somebody shown the variants. The green ones are the existing, and the other variants, this is the choice to the customer. Somebody talked about that we have faded away, or the Meran thing. Why did they discontinue production of Meran? I think people may have the different ideas, but that vehicle was not compliant to WP29 regulations. That was not done forcefully. It was wiped out by the market mechanism, by the good policy which you made. Next. So what are the achievements some of the achievements of our current policy? New technologies in motorcycles, new players in tractor manufacturing, introduction of hybrids and EVs in the market. Rastgar has already launched. Upcoming is Toyota. Tariq Saab would have told you better that they have benefited from the policy, and they have launched that vehicle in the market. You will be seeing it maybe in December or January. So, implementation of WP29 safety regulations. Now we are doing this under the law. Your vehicle is compliant. Daniel also touched this, that if you are making compliant vehicles, only then you can export. So this was also done by government. Government has a role. We kept on negotiating with the UNEC's forum for 2-3 years. Now, the continuity of this policy was also ensured, and now comes biannual updation of 693. There was a myth that when new entrants came in, the old entrants said that now we will, it was like they allowed the government to review it biannually. No, sir, this is not the case.
new entrants have an agreement with the government that this will be applicable to them after 5 years of their incentive period. And it's mentioned in the SRO very clearly. Localization will be in their favor after their incentive period will be exhausted, but this is implemented, and now by your contribution from PAPAM also, we have included the basic parts, some rubber items, some plastic parts, some filters, some lights, etc. And we'll be opening up, because this is a clear stance from the government, either to localize or get some revenue from them. So this is the clear message from the government, that we'll be updating it twice with consultation, with agreement, or even without agreement. If there is no agreement and government thinks, we'll be proceeding for the localization. So export focus, coming to that. Yes, we have, nowadays there are some issues, I'll be coming to that also, but 2% of whatever you import, it's not a very big task. Government thinks in this way, that we gave 2 years to the industry. And by the way, let me tell you, I was the secretary of the previous policy and this policy also. This export target came from the industry. What government did was, it only issued an SRO, because there was some example that auto sector is not complying to whatever government is saying. So that was put in the SRO, now it's obligatory. We understand that it has faced some issues, but why have we faced the issues? I'll tell you. Next. So the mandatory export thing, if you don't export, you don't get the quota for next year. The government says that we could not, by the efforts for last 3 to 4 months, we could not receive the response from the OEMs which we wanted. I repeat, we could not see the serious efforts. A major company has exported carpets. Now they are making some efforts. We have been told that they have shortlisted 45 parts. Another major company is trying to export the CBU. Suzuki has done fuel tanks, but the government now will negotiate in another 5 to 7 days. But our underlying objective is that we want to promote localization, we want to promote exports as well. Now, coming to the new entrants, one more new entrant, Premier, it will be approved soon. The meetings have been done. I think we should start working with the new people. That will be the opportunity for PAPAM also. And their approval was regarding some model change, and that has been facilitated as well. So government is, even now, government is open for incentivizing exports. In case of Master, we didn't go to FBR to tell us how will we feed the data for Master Motors while they were exporting. They have been facilitated under SRO, but now the government is thinking, it's in the policy, that against 1 CKD exported or 1 CBU exported, how many CKDs should we allow? For that, we'll sit with the exporters once again, and maybe in the current budget, we'll try to have something inserted, some incentives inserted for exports, because we don't want to penalize you only. We want exports. We want localization. At the same time, exchequer is there. If somebody is not serious in localizing, then it's a clear stance that they should pay some additional duties. Whatever happens, they transfer the price to the customer. This is not government's job. This is what we discussed in the meetings. Next. With this, I thank you all for the patient hearing. This is from the EDB side. We are open to the questions if you want, or I can join the panel. I understand that we are already delayed due to some long speeches. Once again, from the government side, I can assure you that my Chief Executive Officer or Secretary of Ministry of Industries, they all are open for the discussions. We are from you. We are not a pure government body.
we are a bridge between government and the private sector, and we want to play our role effectively. With this, thank you very much. Thank you. So now we will actually head towards the panel discussion where all the points that the speakers have to address among each other, now is the time for them to address it. Or for the panel, we have Sunil Manch from Park Wheels, who will be sort of representing the social pulse, the market, the people, the perceptions. So I would like to actually start the panel discussion with his comments on what he has heard so far and what is his view on the current status of the industry. थैंक यू वेरी मच. आई होप आप सारों को आवाज़ आ रही है, बिकॉज मुझे आधे लोगों की आवाज़ आधी आधी आ रही थी. तो जो भी मेरा ख्याल है ऑडियो वाले हैं वो सबसे पहले इसको सही कर लें. और यही हाल हमारी पूरी नेशन का है कि हम लोग जो है ना, सर में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवाई खाते हैं. सो अगर मैं आपको कंज्यूमर की पॉइंट बताऊं तो इंडस्ट्री को जो कंज्यूमर देखता है वो आप लोगों को माफिया कहता था. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, हम इसका हिस्सा हैं. बट वो माफिया क्यों कहता था? बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उसको लगता ये था कि एम्पायर को साथ मिला के रूल के गेम किए जा रहे हैं. फॉर लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूमर बिग थ्री को जो है करता रहा कि जी ब्लेम कि ये हमें जो है ना हमसे महंगी गाड़ियाँ दे रहे हैं, और ऑटो इंडस्ट्री को बिग थ्री रिप्रेजेंट करते थे. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वन ऑफ दोज जिसका ये ख्याल होता है कि किसी भी बिजनेस को आप रूल्स देते हैं, रूल्स ऑफ गेम होते हैं, उसमें एम्पायर जो है वो गवर्नमेंट का रोल होता है और बाकी जो कंज्यूमर है वो दूसरी साइड पे है. अब इस रूल के अंदर हुआ ये है कि अगर हम सालों को देखें और 30 साल बाद कोई भी बंदा अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करे तो बड़ी आसान सी बात है. वो कहते हैं जी पहले लोकलाइजेशन 93 में नहीं हुई, डिलीशन पॉलिसी आई, वो नहीं हुई. फिर पॉलिसी का जो शिफ्ट है ना, क्योंकि हमारा जो एम्पायर है वो अनफॉर्चुनेटली चेंज होता रहा है और वो रिएक्टिव अप्रोच रखता है बजाय इसके प्रोएक्टिव अप्रोच के. अभी हम बात करें एक्सपोर्ट करने की और हम कह रहे हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट करना है, हमारी विल भी है. तो इसी इंडस्ट्री में एक गाड़ी का भी आपने जिक्र किया, वो अगर WP29 स्टैंडर्ड ना होते हम आज भी बना रहे होते. वेंडर भी खुश होता कि मैं वही गियर, वही नॉब, वही जो है कुर्सी बनाई जा रहा हूँ. कंज्यूमर भी खुश था, वो उसको लिए जा रहा था. तो हमारी मार्केट बड़ी ट्रिकी सी है. अभी अली ने बात की कि जी हम पुराने कपड़े जो हैं वो मंगा लें, बल्कि आपने एग्जांपल दी थी कि पुराने कपड़ों की बात हुई थी. तो अब अगर आप देखें तो ये डबल स्टैंडर्ड हमारे कंज्यूमर में भी है. हम कंज्यूमर से मिलते हैं, कंज्यूमर कहते हैं जी ऑटो इंडस्ट्री लूट के खा गई, हमें लूट लिया, हमें ये कर लिया. सप्लाई एंड डिमांड साइड है. अगर ऑटो इंडस्ट्री ने लूटा है तो लोकल गाड़ी क्यों लेते हैं? रीसेल के अगर आप फिगर्स देख लें, इंपोर्टेड गाड़ी इधर आप लोगों से वोट करा लें, सारे कहेंगे इंपोर्टेड गाड़ी बड़ी अच्छी है. रीसेल के लिए लेके चले जाएं, इंपोर्टेड गाड़ी साल बाद नहीं बिकती, लोकल गाड़ी बिकती है. दिस मीन्स देयर इज़ अ डिमांड. बट अगेन वो डायकॉटमी ये कि हमने दूसरे को ब्लेम करना है, आगे चले जाना है. अब मैं कंज्यूमर साइड से अगर बात करूं तो मैं ये कहूँगा जी ऑटो इंडस्ट्री बड़ी बुरी है, इन्होंने काम नहीं किया. बट अगेन मैंने खुद भी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए गाड़ी लेनी हो तो मैं लोकल लूँगा कि कल को बिक जाएगी. दिस मीन्स देयर इज़ समथिंग गुड विच इज़ बीइंग डन हियर इन द इंडस्ट्री, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड तो है एटलीस्ट. तो ये चीज़ अच्छी है. जहाँ पे रिएक्टिव अप्रोच की मैं बात करता हूँ तो हम अपने आप को सेल्फ करेक्ट नहीं करें एज एन इंडस्ट्री. और जितने यहाँ पे वेंडर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन सब का इंटरेस्ट उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो शायद कहते हुए डरते हैं. मैं एक कंज्यूमर की आवाज़ के तौर पे आपको बता सकता हूँ. एग्जाम्पल है, अगर कोविड नहीं आया था तो गाड़ियाँ बिक रही थी, सारे बड़े खुश थे, ऑन पे बिक रहा है. जिस तरह प्रॉपर्टी की बात हो रही थी ना, आप एक फ़ाइल लेते हैं, आपने उस फाइल में तो रहना नहीं है, वो फाइल आपने किसी और को देनी है, उसने आगे दे देनी है, वो एक परसीव वैल्यू पे चल रहा होता है. इसी तरह जो ये प्रीमियम की मार्केट थी, बिफोर कोविड बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही थी, हर बंदा जो है वो गाड़ी बुक करा रहा है. अगर आप गाड़ी की फिगर सेल देखते तो आपको लगता था कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है. बट अगर बाकी GDP फिगर्स देखें वो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं थे. कोविड आया, शॉर्टेज हो गई पूरी दुनिया में. बजाय इसके कि हम ये सोचते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं या हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें, हम उस टाइम पे जितने भी वेंडर्स हैं वो बेचारे बहुत परेशान थे. हम इंडस्ट्री में हमारे भी लोग हैं, हम दोस्त हैं, मिलते रहते हैं. लेकिन जो ही कोविड ख़त्म हुआ, बजाय इसके कि हम देखते हैं कि हमने कोई लोकलाइजेशन में फ़ायदा किया है, क्योंकि जब उस टाइम पे कोविड में ये था कि इंपोर्ट नहीं हो रही, हम लोकलाइजेशन बढ़ा लेते, हम अपने वेंडर को जो है डेवलप कर लेते, हम अपने वेंडर की कैपेसिटी बिल्डिंग करते थे. हमने नहीं किया. जो ही कोविड ख़त्म हुआ, दोबारा सेलें रूफ टॉप पे चले गई, सब भूल गए, सब अच्छी की बात हो गई. अब इस टाइम पे जब हम बैठे हैं तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में कोई एक आधी गाड़ी के अलावा बाकी सब ऑफ पे बिक रही थी. फिर सारे सर जोड़ के बैठ गए. अब सबको वेंडर्स को भी नज़र आ रहा है कि कल को ये जो वेंडर को छोड़ें, कंपनी के डीलर जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सी डीलरशिप लें.
अगेन सारे दोस्त हैं हमारे, सबसे बात होती रहती है जी फलानी गाड़ी तो बिक नहीं रही, इतनी बड़ी 3S डीलरशिप खड़ी की हुई है, किसको अब क्या बेचना है। अगेन हमें सोचना ये पड़ेगा, अब पूरी दुनिया बात करती है इलेक्ट्रिक गाड़ी की, 2030 में इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जानी है, हम सारे जो है हम फिर एम्पायर को साथ मिलाने के चक्कर में कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी की पॉलिसी रोक के रखो, हमने आइस इंजन बनाना है, फिर हमने एम्पायर को साथ मिलाने के लिए लगे हुए हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि दीवार पे लिखा हुआ है कि 2030 में इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। अभी आपने तारिक साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी, बड़ी अच्छी, उन्होंने नोकिया की एग्जांपल दी थी, ब्लैकबेरी की एग्जांपल है, हमारे मुल्क में अगर आप देख लें तो प्रेस की एग्जांपल है, न्यूज़पेपर कहाँ चले गए, इसी तरह मीडिया चैनल्स की भी एग्जांपल है। अगर आप अपने चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो चेंज रुकेगी नहीं। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर भी अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आती है, जो फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है कि जी हमें इंजन टेक्नोलॉजी आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला, हेयर गोज इंजन तो वैसे ही बाहर चला गया, तो 2030 में तो इंजन की वैल्यू कोई नहीं है। तो उन्होंने अगर हमें इंजन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की, वी हैवंट लॉस्ट दैट मच। अगर हम मेटल पार्ट्स को फैब्रिकेशन कर रहे हैं, हम मटीरियल बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ें बना रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। बट वो वही है, अगर हम उस अमर को मानेंगे कि हाँ भाई ये गलती है हमारे अंदर या हम इसको सही कर सकते हैं। आजकल एक बड़ा टॉपिक चल रहा है एक्सपोर्ट को लेके कि जी एक्सपोर्ट जो है, कल ओपनिंग स्पीच जो होंडा के थे उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट गवर्नमेंट जो है वो डंडा लेके बैठी हुई है और वो कह रही है कि एक्सपोर्ट करें। एज़ पर माई नॉलेज, अगेन जब आप रूल ऑफ गेम डिसाइड करते हैं, आप कहें कि जी अगर आप फुल टॉस देंगे तो ये छक्का होगा वरना चौका होगा, हम खेलना शुरू कर देते हैं और जब पहले की बारी ख़त्म हुई थी मैं कह नहीं ये तो आपने गलत किया हुआ है। सो ये एक्सपोर्ट टारगेट्स जो भी बात थी, आपने उस टाइम पे जब नए एंट्रेंट्स आ रहे थे तो एग्री किया था सबने, तो बजाय इसके कि हम उसको नेगोशिएट करके फिर एम्पायर को साथ मिलाने की कोशिश करें, वी शुड डेवलप आवर वेंडर्स। जो इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल से मैं देख रहा हूँ पूरी यहाँ पे, मतलब कोई एरोनॉटिक्स के पार्ट बना रहा है, एक स्टॉल पे मैं गया वहाँ पे वेंटिलेटर्स बने हुए थे। तो हम अगर हर चीज़ बना सकते हैं तो ये गाड़ी के पार्ट्स बनाना भी कोई इशू नहीं है। बट अगेन अगर हम अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ इस पे रखेंगे कि जी उन्होंने अगर डिसाइड करना है कि 30 साल बाद एक मॉडल डिसकंटिन्यू करें और हम उसी के साथ काम करते रहें, तो ऐसे मेरा नहीं ख्याल की चीज़ें चलेंगी। सो देयर इज़ अ बिट ऑफ मिस्टेक ऑन ऑल साइड्स। कंज्यूमर साइड पे भी मिस्टेक है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हम कहते हैं कि जी हमें इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए, लेते हम लोकल ही हैं। गवर्नमेंट साइड पे भी ये है, अगर 20-30 साल से पॉलिसी कंसिस्टेंट रही होती तो शायद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की होती लोगों ने कि वो ऐसी चीज़ में। अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, दानियाल इज सिटिंग हियर, ही वुड एग्री विद मी कि बिजनेस का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर उनको लोकलाइजेशन में फ़ायदा है और यहाँ पे लोकल मार्केट में चीज़ मिलती है, उनको क्या ज़रूरत है कि वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे। बट ओवर ईयर्स हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमारे पास कैपेबिलिटी है, बट वो मैं उसको कहूँगा ट्रांसफ़र प्राइसिंग कह लें या जहाँ से वो कंपनी आई होती है वो इनडायरेक्टली वहाँ पे प्रॉफिट रिपेट्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अब जो इस सूरत हाल में हम लोग बैठे हुए हैं कि इंडस्ट्री की सेल्स श्रिंक कर गई हैं, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, तो अब हम सारे बैठ के हैं और एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आई थिंक इट्स टाइम वेयर वी शुड रियलाइज़ कि कहाँ पे सिनर्जीज़ हैं, कहाँ पे लोकल इंडस्ट्री जो मिल के वेंडर इंडस्ट्री जो है वो एक्सपर्टीज़ अपनी ला के अपने जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी कॉस्ट को नीचे ला सकती है। बिकॉज दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। जो अभी हमने पिछले 2 साल में देखा है कि वो कंपनी जो लोकलाइजेशन नहीं करेगी वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। बिकॉज आपका डॉलर, अभी तारिक साहब बात कर रहे थे, हर 2 दिन बाद आप निवेश नीचे भी ले आएँ, वो आर्टिफिशियली नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। सो दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि अगर आप इंपोर्टेड पार्ट्स के ऊपर अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करेंगे तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर चली जाएंगी। एंड लास्टली अगेन जब ऑटो इंडस्ट्री की बात होती है तो सारे बहुत ज़्यादा रेडार में भी आते हैं। हमारे मुल्क में बजट आ रहा होता है तो लोगों को रोटी की प्राइस से ज़्यादा गाड़ी की प्राइस के बारे में जो है ना फिक्र होती है। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा जो मुझे नज़र आता है जो कि अनहर्ड या रेडार में नहीं आता, वो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है। कल बात हो रही थी कि 25 लाख मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बनता है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अगर आप वैल्यू देखें तो दे आर पुटिंग लॉट इन दैट सेंस। और ब्लेम गेम में अगेन मैं हमेशा फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट कहता हूँ कि अगर आप एक एंड प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसमें 60% शेयर अगर ऑटो मैन्युफैक्चर का है तो 40% गवर्नमेंट उसका शेयर होल्डर है। 100 रुपये की चीज़ है या अगर करोड़ रुपए की होंडा बिकती है और कंज्यूमर कहता है बहुत महंगी है, तो होंडा वाला तो बेचारा 60 लाख रुपए लेके जाता है, 40 लाख तो गवर्नमेंट ले जाती है। तो जो रेगुलेटर इधर है वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ब्लेम गेम है। उसको देखना ये है कि वो अब जब लोगों के बारे में, क्योंकि इन पॉलिटिक्स इट्स लाइक वोटिंग, जब वो लोगों से वोट लेने जाता है वो कहता है यार ये सारे बड़े बुरे हैं, ये बहुत महंगी गाड़ी दे रहे हैं, और अंडर हैंड अगर देखा जाए तो 40% वो पार्टनर भी है। सो ये बड़ी एक डायकोटमी है हमारे यहाँ पे, और इस डायकोटमी को भी तभी हल किया जा सकता है कि जब हम सारे इकट्ठे होंगे। अगर डिवाइड एंड रूल रहेगा, जब मैं वेंडर इंडस्ट्री को मिलूँ मैं कहूँ जी ये आपको बेच के खा गए हैं, इनको मैं मिलूँ मैं कहूँ जी ये तो गंदी चीज़ें बनाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर के पास मैं वोट लेने जाऊँ मैं कहूँ जी सारे बुरे नहीं, मैं आके सही कर दूंगा। सो वी हैव टू हैव वन, वी ऑल नीड टू बी ऑन वन पेज।
वी डोंट हैव टू हैव अ क्लोज्ड ईयर कि मैं कहूँ जी कंज्यूमर की मैंने बात ही नहीं सुनी. येस, वी शुड लिसन टू कंज्यूमर्स ऑल्सो, बट विद इन इंडस्ट्री मेरे ख्याल से एक ऐसी सिनर्जीज क्रिएट करनी चाहिए कि उसमें हमारी वाकई वैल्यू चेन के अंदर कोई, हम ये भी देखें कि अगर मैं 30 साल से अगर एक प्लास्टिक पार्ट बना रहा हूँ तो मैं ये खुद देखूँ कि यार मेरे साथ ये कंपनी क्या कर रही है, या मुझे इन्होंने कोई चीज़ सिखाई भी है कि नहीं. एक सेल्फ एवेल्यूएशन बड़ा ज़रूरी है पूरी वेंडर इंडस्ट्री में. दीज आर द, मतलब मेरा अगेन आई एम द यंगेस्ट इन द पैनल, आई थिंक बारिंग दानियाल के अलावा बाकी सबसे मैं यंग होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं कंज्यूमर की जो हम लोगों से मिलते रहते हैं, ये वो मैंने थोड़े बहुत आपको पॉइंट बताए हैं जो मुझे लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट है. Thank you, Sunil. Does anybody on the panel want to comment on what he has said? अब ये सुनील ने एक बड़ी अच्छी बात की कि अभी मेरी सजेशन थी कि जिस पे बात आई थी कि अगर हम सेकंड हैंड मार्केट खोलें तो शायद फ्लड हो जाए, बट सुनील के कंज्यूमर पर्सपेक्टिव है कि उससे मार्केट फ्लड नहीं होगी, क्योंकि हमारी आफ्टर सेल मार्केट और बहुत सारी OEMs की वजह से वो डेवलप हुई हैं. तो अगर हम उनकी प्राइस में कम, अगर गैप कम भी कर देंगे तो मार्केट में फ्लड नहीं होगा. सो हमें वो चीज़ डरनी नहीं चाहिए कि वो हमें इससे नहीं डरना चाहिए कि ये हमने मार्केट खोल दी बायर वाली. मेरा आर्गुमेंट ये नहीं था, एक आमिर भाई, मेरा आर्गुमेंट ये नहीं था इन सारे दोस्तों के कि हम ऑटो इंडस्ट्री को बंद कर दें. मेरा आर्गुमेंट ये था कि हम ऑटो इंडस्ट्री को चैलेंज करें. सो आर्गुमेंट था चैलेंज करें. आर्गुमेंट ये था कि मार्केट को थोड़ा सा खोलें. जब मार्केट खुलेगी ना तो आप लोग चैलेंज्ड होगे, और अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, विच आई थिंक यू हैव इट, मैं आप लोगों को, मतलब सुनील के और दानियल के बाद शायद मैं ही सबसे छोटा हूँ, और मैं जब से इस मार्केट में आया हूँ मैं आप लोगों से देख रहा हूँ, मैंने ऑटो इंडस्ट्री में आप लोगों से ही सीखा है. यहाँ पे जो लोग बैठे हैं मेरी मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन यही लोग देते हैं, या यहाँ पे कुछ नहीं बैठे वही देते हैं, और यही जो फीडबैक आपको मैं जो जवाब दे रहा होता हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा होता हूँ कि आप में से लोग जो इस जगह पे आके जो सुनील बात कर सकता है, जो मैं बात कर सकता हूँ, वो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सुनील और मेरा एक लिहाज से मीडिया से ताल्लुक है, तो हम लोग खुल के बात कर सकते हैं. तो वो बात यह कि आप लोग चैलेंज होंगे तो चीज़ें होंगी. तो गवर्नमेंट ने ये 2% 4% एक्सपोर्ट का जो किया है, ये आपको चैलेंज किया है, ये चैलेंज किया है, और मेरे ख्याल में आप इस चैलेंज में पूरे उतरेंगे. अली भाई, आप बात जो कह रहे हैं वो लॉजिकल तो है, लेकिन मैं एक फैलेसी की तरफ आपकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ. वो फैलेसी ये है कि यूज्ड कार के आने से इंडस्ट्री को जगाने में मदद मिलती है. ये बात गलत है. मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ. 2011 में गवर्नमेंट ने यूज्ड कार को 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया, और तकरीबन मैं खुद 5 साल तक उसको मॉनिटर करता रहा इस डेटा को. 25% गाड़ियाँ जो आती थी पाकिस्तान में देवर रिकंडीशन या यूज्ड कार जो हैं वो आती थी, और 75% शेयर जो था वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड के पास था. कोई तब्दीली नहीं आई ऑटो सेक्टर में. ये जो एक अजम्पशन है ना कि ये एक वैल्व है यूज्ड कार जिसके ज़रिए हम ऑटो सेक्टर की ट्यूनिंग कर सकते हैं. जो बिग 3 थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया. वो अपने मॉडल्स चलाते रहे, अपनी प्राइसिंग चलाते रहे, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लेती रही. फ़र्क सिर्फ क्या हुआ कि वो हर महीने जो 8,000 यूज्ड कार आती थी, 8,000 तक आई है, उसमें वेंडर्स के पार्ट नहीं थे क्योंकि वो लोकल नहीं बन रही थी गाड़ी. तो मैं कहना ये चाहता हूँ सर कि कॉज एंड इफ़ेक्ट को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है. ऑटो इंडस्ट्री को आप सख्ती से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेरा बिलीफ है. आप किसी को भी, अपने बच्चे को भी, औलाद को भी सख्ती से कंट्रोल नहीं कर सकते. ऑटो सेक्टर को कंट्रोल करने का तरीका ये है. अब देखिए ना, इतने सारे नए प्लेयर्स आ गए. क्या छोटी गाड़ी की कीमत कम हुई आफ्टर द न्यू पॉलिसी? क्या गाड़ियों के डिलीवरी लीड टाइम कम हुए? क्या ऑन मनी का मेनेस ख़त्म हुआ? क्या गाड़ियों की ओवरऑल कीमतें कम हुई? कुछ भी नहीं हुआ ना. तो आपने कुछ भी कर लिया. बात यह है कि सुनील ने सही कहा, मार्केट ड्रिवन एनवायरनमेंट है. हमें जो काम करना है वो ये कि मेरे ख्याल में ऑटो सेक्टर को, जिसमें OEMs हैं, वेंडर्स हैं और गवर्नमेंट है, वी शुड वर्क टुगेदर एज अ टीम. समटाइम्स द गवर्नमेंट शुड कॉल द OEMs एंड आस्क देम, यार आपका प्रॉब्लम क्या है? हम ये 20 पार्ट्स हैं, ये हमने आइडेंटिफाई किया, इनको हम लोकलाइज कराना चाहते हैं. मैं आपको बताता हूँ मेन रीज़न क्या है. मेन रीज़न ये है कि जब OEMs तो पाकिस्तान में आ गए हैं, जो ग्लोबल वेंडर्स हैं वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं हैं. उसकी वजह ये है कि ग्लोबल वेंडर्स ही कहते हैं पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, वो अपने लोगों को भेजने के लिए तैयार नहीं है. पाकिस्तान का वेंडर, जॉइंट वेंचर
या टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए अभी मैच्योर नहीं है, और पाकिस्तान की वॉल्यूम 5 लाख पर ईयर नहीं है, तो वो मना कर देता है साफ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जापान में जो वेंडर है वो OEM से किसी हद तक ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू द वेंडर। हर वेंडर का 6% का R&D का अलाउंस होता है उसके कॉस्ट ब्रेकअप में। जो पार्ट की टेक्नोलॉजी और ड्राइंग है वो वेंडर को बिलोंग करती है। OEM उससे रिक्वेस्ट कर सकता है, उसकी टांगे मरोड़ सकता है, बाजू मरोड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वेंडर अगर कहे मैं नहीं आता तो नहीं आएगा। तो वी नीड टू वर्क टुगेदर। May I add one thing with permission of सर, यूज्ड गाड़ी में जब पार्ट पपाम का नहीं लगता तो वो कैसे आता है पाकिस्तान में? यानी एक गलत काम करके हमने उसको फॉलोड बाय अनदर गलत काम किया हुआ है कि पर्पसफुली बाहर से यूज्ड ऑटो पार्ट की इंपोर्ट पाकिस्तान में बैन है। ठीक है, पर्पसफुली आप बाहर से फिर माल बुक कराते हैं उसी गाड़ी का, पोर्ट पे उसको पकड़वाते हैं और 30% फ़ाइन दे के आप उसको क्लियर करवा लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे बातें ये कर रहे हैं कि जी वॉल्यूम मिले लोकल वेंडर को। ये ट्रक इंडस्ट्री, बस इंडस्ट्री, सारे डिफरेंशियल यूज़ पार्ट में कबाड़ में आते हैं, जुर्माना दे के क्लियर होते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी हीनो की या सूज़ो की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 17-18% से ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं ऐड करना चाहता हूँ टू वट आमिर साहब सेड। थैंक यू। अच्छा, मेरा ख्याल है सुनील ने बहुत अच्छी कमेंट्स दिए ऑन द बिहाफ ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड OEM एंड वेंडर्स। इसी तरह खिजर ने भी बड़ी अच्छी बात करी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं ना, दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द डायरेक्शन। अगर आप इंडिया की एग्ज़ाम्पल लें, इंडिया के अंदर कोई यूज़ कार अलाउड नहीं है। अगर मर्सिडीज़ आज से 15 साल पहले चाहता था कि यार मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे करूँ, तो उन्होंने कहा आप एक प्लांट लगाओ यहाँ पे, असम्बल करो, चाहे आप लोकलाइज बाद में करो, बट अब व्हेन यू स्टार्ट द असेंबली देन द लोकलाइजेशन विल ऑटोमेटिकली हैपन। सो इसी तरह एक्सपोर्ट में जो EDB की डायरेक्शन है, मेरी अपनी सजेशन ये है कि इनको बड़ा फर्म रहना चाहिए। बिकॉज टर्की में प्लांट लगा था टोयोटा का, जब हमारा भी लग रहा था, तो वी गॉट द ट्रेनिंग एट अ सेम टाइम इन 91 एंड देन 93 से उन्होंने, उनकी कैपेसिटी का लगा था 25,000, हमारा 10,000 का लगा था। अच्छा, थोड़े अरसे में जाकर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो बिल्कुल ही बैड शेप में आ गए। देन उनकी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई। आज वही टोयोटा के प्लांट पे 2.5 लाख गाड़ी बन रही है, जिसमें से 1.5 लाख गाड़ी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वियतनाम मैंने जब विज़िट किया तो वियतनाम का जो टोयोटा का प्लांट था उसकी हालत ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये सबसे सिंपल हमारा प्लांट है, एक मॉडल के जिग को धक्का दे के वो हटाते थे और दूसरा मॉडल को लाते थे और वो थे। आज वियतनाम के उसी प्लांट पे वो कम से कम जो है ना 1 लाख गाड़ी बना रहे हैं और उनमें से काफ़ी एक्सपोर्ट। वियतनाम की एग्जांपल हमारे सामने है। सिर्फ जो डिफरेंस आता है ना थोड़ा सा, जो मैं आबिर की बात से फुली एग्री करता हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इजीनेस होना चाहिए, ठीक है, एक पॉलिसी है, फर्मनेस होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा इन्वेस्टर है उसके कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब तक कि हम उसको नहीं करेंगे वो आएगा नहीं यहाँ पे। चाइना आने के लिए तैयार होता है, चाइना इज़ गोइंग एवरीवेयर। चाइना ने थाईलैंड के अंदर, जब इंडिया, कनाडा और USA के अंदर पाबंदी लगी, उन्होंने सबसे ज़्यादा वियतनाम में इन्वेस्टमेंट कर डाली, मलेशिया में कर डाली, थाईलैंड में कर डाली। पाकिस्तान में क्यों नहीं करते वो? पाकिस्तान में डरते हैं थोड़ा सा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर और हमारा जो है ना वो नहीं है। अच्छा, अब ये सारी बातें तो अपनी जगह हो गई। मेरा अपना ख्याल ये है कि गवर्नमेंट की 2 डायरेक्शन ऐसी हैं जिससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक, इन पे एक्सपोर्ट को फर्म रहना चाहिए। नंबर 2 ये कि जो ये साल में 2 बार SRO 693 अपडेट कर रहे हैं, इसको करना चाहिए। और उससे होगा ये कि जो न्यू इंट्रेंट भी हैं, जिसे हम कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, 5 साल शेल पास टू, बहुत से तो ऐसे हैं जो 2024 में इनको आना पड़ेगा, तो वो तो उनको फिर करना ही करना पड़ेगा। तो वो मैं खौफ नहीं है कोई, इट्स वेरी गुड फॉर सपोर्टिंग दैम कि वो इस तरीके से आ गए ये। मगर जो फ्यूचर है ना वो इस कंट्री का, वो सिर्फ लोकलाइजेशन में है, क्योंकि वी हैव द बेस्ट पीपल अवेलेबल। यार हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। अभी हमने अपने 22 टीम मेंबर्स को जापान भेजा टोयोटा। अभी यकीन करोगे, उनका हमें जो रिपोर्ट आई पहली 6 महीने बाद, तो उन्होंने कहा कि ये इनका जो एटीट्यूड और इनकी जो माइंडसेट और शार्पनेस है, दिस इज़ बेटर देन इंडियन पीपल। यार वो तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उनकी जो उन्होंने काइजन किए बता रहे हैं।
तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है ना इस टाइम, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है, एंड वी कैन डू अ लॉट, बट व्हाट वी नीड इज अ पॉलिसी। एंड सब बातों के बावजूद, जो मैंने आपको फ्रॉग वाली एग्जांपल दिया ना, जब तक आप में से एक एक इंडिविजुअल उठेगा नहीं और उसी तरह रहेगा, तब तक कुछ होगा नहीं। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू स्टार्ट द एक्टिंग। Thank you for your interesting insights. And I think that वैसे तो session थोड़ा drag हो रहा है. If anybody has anything to say, तो please. मेरा सवाल आसिम साहब से है। हमें मालूम है 2016-21 की पॉलिसी जो आई, तो जो पुराने OEM से वो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड का आजकल वैसे भी काफ़ी चर्चा है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हुई और 5 साल का कंसेशन दिया गया। आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो एक्सपोर्ट पे अभी IORCs रिवाइज नहीं हुए, ये एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी आई है 2021 में, तो क्या ये भी अप्लाई नहीं होते न्यू एंट्रेंट पे, और ये भी सिर्फ पुराने प्लेयर्स पे ही अप्लाई होंगे? गुड क्वेश्चन जी। चेयरमैन साहब, ऐसा है कि जो न्यू एंट्रेंट्स के एग्रीमेंट्स थे उसमें एक एक्सपोर्ट प्लान तो लिखा हुआ है, लेकिन वो नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं था। न्यू एंट्रेंट्स का एग्रीमेंट हमने लॉ डिवीजन को भेजा। ये अब एक और फोरम है SIFC, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी डिस्कस हुआ है, और कुछ लोग इसमें स्टे ऑर्डर में भी गए। तो जो डिसीजन का स्पिरिट है वो ये था कि इस वक्त आपकी शिपमेंट्स रुकी हैं, पुराने और नए सबकी, वो रुकनी चाहिए थी या नहीं रुकनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो ऑटो सेक्टर के साथ मीटिंग्स हमारी 3 हुई, उसमें शायद गवर्नमेंट ने समझा कि जो प्लान इन्होंने हमें एक्सपोर्ट के लिए दिया है वो इतना कंक्रीट नहीं है, या जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन थी गवर्नमेंट को उस पर एतराज़ था। ये बात हाईलाइट हुई है कि जी कुछ सीरियस एफर्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। एप्लीकेबिलिटी का आपने सवाल किया, न्यू एंट्रेंट का एज वी अंडरस्टैंड जो एग्रीमेंट हमने लॉ से, बल्कि सीनियर लॉयर से पर्सनली भी कराया, जैसे प्राइवेट सेक्टर हमसे नहीं लड़ना चाहता, हम भी चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर से हम ना लड़ें, हम अपने आप को एग्रीमेंट को ऑनर करें। उसमें एक अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हमने किया 2020 में और SRO आया 2021 में। तो एक लीगल लकूना था कि हम उनसे ये पूछ रहे थे कि लॉ जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है या एग्रीमेंट। तो इस पे हमें अब ये जो कमेंट्स आए हैं कि जी ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट सुपीरियर है, आप उसको ऑनर करें। सिर्फ आपको मैं बताता चलूँ कि ये 4 बजे से कोई 5 मिनट पहले हमें आया एग्रीमेंट, और हमने एज वी आर टॉकिंग हमने 7 न्यू एंट्रेंट्स के कोटाज अपलोड कर दिए हुए। हमने अभी रिटर्न फैसले का इंतज़ार भी नहीं किया। दूसरों का भी ये है कि मुझे लगता है कि अर्ली नेक्स्ट वीक कोई मीटिंग होगी। गवर्नमेंट भी ये समझती है कि ये तरीका नहीं है कि आप शिपमेंट्स दें, उसका फ़ायदा किसको होगा। शिपमेंट रोकने से डैमेज होगा, कुछ चले FBR को कुछ आ जाएगा, कुछ शिपिंग कंपनी को चला जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब आपका कोटास जो होते हैं जुलाई में जून में ख़त्म हो जाते हैं, तो हम 3 महीने का प्रोविजनल दे के इट्स अस EDB हु इज़ टॉकिंग टू ऑटो सेक्टर के खुदारा इसका कुछ कर लो। हमें ऑटो सेक्टर की तरफ से वो फॉलोअप नहीं मिला। हम कन्विंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को या इवन जो कुछ और फोरम्स हैं अब उनको नहीं कर पाए, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अब भी जो थिंकिंग है गवर्नमेंट की वो मैं फ्रैंकली बता दूं कि ये दिसंबर तक किया गया है। फिर एक दफ़ा पार्ट मैन्युफैक्चरर्स को OEMs को बैठना पड़ेगा और कुछ प्लान देना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है न्यू एंट्रेंट का जब मॉडल ख़त्म होगा उसके साथ उस वक्त देखा जाएगा या उस वक्त उससे पूछा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली न्यू एंट्रेंट्स मेरे ख्याल में बेहतर बताएंगे, उनके भी अब 3 साल रह गए हैं, आज से तो 2.5 साल रह गए। कुछ वॉल्यूम कुछ मॉडल तो उनके आए ही नहीं, जो मॉडल वो कल लाएंगे या 6 महीने बाद बिजनेस प्लान में लाएंगे, तो 2 साल के बाद तो उनको उसकी लोकलाइजेशन करनी ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में सेटल हो जाएंगी। लेकिन सवाल बहुत अच्छा था आपका, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, स्पेशली द ऑडियंस। आई होप कि ये डिस्कशंस आपके लिए इंटरेस्टिंग रही हो। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द गेस्ट्स एंड पैनलिस्ट जो आए
और अपना ओपिनियन शेयर किया, बिकॉज अगेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ courage and also interest in the interest of the country to come and speak and share. So I think they all deserve a big applause of appreciation. Mr. Adil Nakhoda, Mr. Imtiaz Rastgar, Mr. Asim Ayaz, Mr. Tariq Ahmed Khan, Mr. Ali Khizr, Mr. Amir Allahwala, Mr. Danial Malik, Mr. Sunil Manch, Mr. Murtaza Mandiwala,